Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Yes, sir. See, many students will think what ना कि सर अभी तो रिजल्ट आने में टाइम कितने 3 हफ्ते है. Yes, you have good 3 weeks, everyone. So many students will say कि सर रिजल्ट आने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. That's the problem. अगर आपके पास अभी टाइम है, आई एम नॉट सेइंग दैट स्पेंड 4 hours 5 hours on studies. Whatever we have done, just revise and do the questions relating to the fast paper. It's simple. Do not wait till your result. कि ultimately paper तो देना ही है, या this quarter or the next quarter. So if you do now, again when you do for the next quarter, it will be a revision for you. Understanding everyone? It will just be a revision. So do not have a mindset कि sir after the results, once the results are announced, we will do etc. Because I've seen multiple students that doing that only. कि सर अभी एग्जाम आने वाला 20 दिन है, किट चालू करेंगे. आई डोंट नो व्हाई. अरे रास्ता बहुत साफ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. इट्स वेरी क्लियर दैट यू हैव टू डू दीज थिंग्स टू पास द एग्जाम. देन व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग इट? व्हाई आर यू कीपिंग एट द एंड? यस. सो स्टार्ट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करनी है. क्लास के बाद में जाओ, अच्छा, हैव योर लंच, स्लीप, टेक अ गुड रेस्ट, देन जस्ट सिट फॉर 1 hour, स्टडी एंड देन गो आउटसाइड, चिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी आज संडे, आज कुछ भी मत करो. आफ्टर द क्लास हैव अ लंच, देन गो आउटसाइड, रोम अराउंड एक्सेट्रा. देन मंडे सेट जो भी किया है, जस्ट रिवाइज, डू 3 to 4 पास्ट पेपर्स. हार्डली इट विल टेक 1 hour. अगर आप 2 क्वेश्चन करोगे, इट विल टेक 1 hour. स्लोली as you do questions, the time will reduce, and within 30 minutes or 35 minutes you will be able to solve good number of questions. And you will see कि सर बार बार वही points repeat हो रहे. So you will also get into that zone कि sir, if a question comes this way, how should we answer? So everyone, once again, good morning, good morning, good morning if you have joined late. So we have completed what all, everyone? Conceptual framework हो गया. Then we have done what? IAS 16. Then we completed what? IFRS 13 fair value, which is a very important topic. Then we started with what, everyone? Lease. Leases. Did we do leases or not, basic, everyone? अफीफ किधर आज नहीं है? राधे राधे बेटे. सोया है ना? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, धीरे धीरे आएंगे वो. चलो एवरीवन, सो लेट अस. आया है क्या? हाँ अभी आया होगा. अभी 28 हो गए ना. चलो एवरीवन, चलो 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 चलो. एज आई मेंशन एवरीवन, many, if you have already have the access to the portal, everyone, I've already uploaded the question bank there, and I hardly mentioned what there are 8 type of question. Now एक बार मैं बता देता आपको when coming to the list of the past paper, everyone. So everyone, can you see the definition? Definition से कितने questions है? From definitions there are there's 5 questions in total definition. Basic accounting and definition, again 2 more questions. Sale and leaseback, 3 questions. Remeasurement, 1 question. Lease and non-lease, 1 question. Sublease, 8 question. Deferred tax will not be doing now. You will be doing this later. Yes sir. इतने ही क्वेश्चन, हार्डली 4 टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ना. आज अपन करेंगे, क्लास में भी अपन डिस्कस कर लेंगे सारे, चाहिए तो. कुछ है ज्यादा, इतना है नहीं उसमें. यस सर. सो चलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद लीजेस. अगेन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डन यस्टरडे. सो लीज का मीनिंग क्या था एवरीवन? दैट अ पर्सन नोन एज हु? लेसर. ओनर. ओनर, मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पर दिया. आई हैव गिवन माय प्रॉपर्टी टू यू ऑन रेंट, एवरीवन. सो फॉर मी इट्स एन इनकम, फॉर यू इट इज एन एक्सपेंस. आई एम हूं, आई एम द ओनर. मैं कौन हुआ? लेसर. आप लोग कौन हुए? लेसी. So normally lessee will pay every year rent. So 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Can I say this will be recorded as an expense by Raju? Debit, expense, credit, cash, debit, expense, credit, cash. But we are learning something new. IFRS 16 क्या बोलता है? Your life is complicated because of one thing, that is discounting. So you have to discount these values, everyone. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा. So when you discount, everyone, you get this value, and the total was how much? 37,900. The 37,900, what should you do? You should record this ROU, and you should record this as what? Lease liability. Sir, ROU को क्या करना था? Depreciate करना था. Sir, lease liability को क्या करना था? What should we do for lease liability? Unwinding. अरे पिछले attempt a question was there for 12 marks, a 6 mark straightforward question. How will you do the accounting of lease? You have to write 6 points. You record ROU, lease liability, ROU, depreciate, lease liability, interest, you record carrying amount, etc. 6 marks straightforward question in the exam. So
I say 10 mark will be straightforward, which you have to just explain. So avoid silly mistake there. Yes, sir. Then ROU we depreciate for lease liability. We unwind it, we reduce the payment, we have the closing balance. Now this closing balance मैंने क्या किया था? सर ये जो closing balance है ना, इसको divide किया था किसमें? Current and non-current. So next year balance will be what, everyone? Your next year balance will be non-current liability. The difference between these two was what? Your current liability. Yes, sir. तो अपन ये पूरा किया था and we have understood. If you know this, the entire coming standard will become easy. कुछ नहीं अभी यही है. अभी अपन को क्या पढ़ना है? Now what we have to read? Sir, what is included in ROU? Sir, क्या क्या include हो सकता है ROU में? What all is included in lease liability? Sir, how should we depreciate, etc. We have to learn that. Yes. So now, before moving forward, two important key terms I want to introduce everyone. The first one is arrears. The second one is advance. Now, everyone, when I say that I'm doing the payment in arrears, इसका मीनिंग क्या हुआ? आज मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर लिया है. आज मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर लिया. आई एम पेइंग द रेंट एट व्हाट डेट? 31/12/2000 एक्स्ट्रा. इसको क्या बोलते हैं? अरियर्स. आई पे द रेंट एट द ईयर एंड. दैट इज नोन एज व्हाट एवरीवन? अरियर्स. सो कैन आई से इफ आई एम पेइंग 10,000 ईयर एवरीवन, इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा कि नहीं? सर, वी हैव टू डिस्काउंट दिस. यस. बट एवरीवन, आई से that I'm doing the payment today only. I'm doing the payment at the 1st January. I'm doing the payment at 1st January. Now, when coming to this, everyone, what are the cash flows you will discount? Will you discount today's 10,000? अरे No. for this you will not apply No. value concept. अरे नहीं, आज का 10,000 ही होगा. Today's 1 rupee is equal to today's 1 rupee only. Today's 1 rupee is not equal to tomorrow's 1 rupee. So only these 4 payments you will discount. In what case, everyone? एडवांस. क्लियर सबको ये? Arrears and advance. I hope इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं. Even though if you have 9 paper exemption in your college here and there, if you have done something, you will be knowing this term. Because college के लिए जब एग्जाम का पेपर भी बनता है, रट्टा मार के भी जाते हो. जब रट्टा भी मारोगे, ये दोनों टर्म तो रट्टा मारा होगा और सब थोड़ा बहुत तो समझा होगा कि सर अरियर और एडवांस क्या होता है. और फ्रॉम अ एरियर्स में कॉमन ऑल, एडवांस में फर्स्ट को छोड़ के बाकी. यस. एडवांस का मीनिंग क्या? पैसा आज ही दे दिया, अभी तक काम किया नहीं, इस्तेमाल नहीं किया. यस सर. So with this is done, everyone. So now the basic understanding we have got, everyone. Now we will do the first point, everyone, the definition. Definition is very very important, and in definition also, everyone, there are 2 points जिससे क्वेश्चन आता है. हमेशा 2 पॉइंट से क्वेश्चन आता है. फिक्स है. You see the past 5 papers, from those only questions are made. Yes sir. So now, as I mentioned, जब कोई भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले डेफिनेशन सर, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? recognition. उसके बाद में क्या? measurement. Then presentation, de-recognition and disclosure. Now definition Q. Sir, first we have to check whether lease will apply or not, whether IFRS 16 will apply or not. Yes. So everyone, giving you time, you should learn this definition also because it will carry technical mark. Giving you time, everyone, please read this. मैंने 5 parts में divide किया है, 2 words. Just read it, everyone. Then I'll explain each and every point. Altama Shafif, Mustafa Izzat, Abish, Arjun, Ashwini, Inab, Farhan, Hari, Hetu is there, Ishan, Jesna, Kavya is there, Keshav, Kushi, Kushal, Maneet, Manu, Mohit, Nevin, Purnima, Rahul Mehta. Rahul Mehta, कैसे हो बेटे आप? Good, sir. Good. Yes, sir. Bhavika is not there. She mentioned that she attended the class. I've added her in the group, huh? सर, Yes बेटे. ये जो ऊपर आपने एरो के नीचे लिखा हुआ ये 5 जो ये मत पढ़ो, यही ये आपका मत पढ़ो. है? अरे ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो बाबा, खाली ये पढ़ो 5 टर्म बस. हाँ, समझ में ये आएगा ऊपर तुमको, वाले समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है मैंने. यस. पढ़ लिया सब लोगों ने? यस.
चलो अभी इसको कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू एवरीवन. चलो सी एवरीवन, लेट मी आल्सो रीड. लीज इज व्हाट एवरीवन? लीज क्या होता है सर? लीज तो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. If I've given my property to you, everyone, it is what? A contract. We do agreement or not? 11 months, 2 years, 3 years, 4 years, 100 years lease, 50 years lease, government gives. We do a contract. So lease is what everyone? Contract. So contract में क्या लिखा है? Contract that conveys what? The right to control the use of what? An identified asset. For what? For a specified period of time. In exchange of what? Consideration. लेन देन होगा कि नहीं पैसे का? तो contract होगा. Time period will be specified between you and me. Consideration will also be specified. Yes, sir. Now the question that comes in the exam will be from these 2 points only. You see the past 5 papers, इसी से क्वेश्चन है. And in the class we'll do 3 questions. और बाद में आपका काम क्या है? जो एग्जाम किट में 4 या 5 क्वेश्चन है वो आपको करना है. So see everyone now. Everyone on the day 1, when I mention the term control, does control means ownership? नहीं. कंट्रोल का मीनिंग क्या था? कंट्रोल मीन्स आई हैव राइट. मेरे पास अधिकार है. क्या अधिकार है? आई हैव द राइट टू यूज एंड टेक व्हाट? द बेनिफिट ऑफ द एसेट. सो इफ टुडे दिस फोन बिलोंग्स टू मी एवरीवन, आई हैव गिवन दिस टू यू. मैं ओनर हूं, मैं लेसर हूं, आपको मैंने फोन दिया है. तो दैट मीन्स एवरीवन, आई हैव द राइट टू अर्न द बेनिफिट. यू आल्सो हैव द राइट और नॉट? यू विल यूज दिस फोन. लेट्स से कि सर मैं ब्लॉगर हूं, आई मेक रील्स ऑन इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सवाइजेड, आई मेक मनी. तो कहने से यू हैव द राइट टू कंट्रोल. कंट्रोल का मीनिंग क्या है? टू टेक द इकोनॉमिक बेनिफिट. व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट? छोटा बेनिफिट के बड़ा बेनिफिट? obtain substantial all economic benefit from the use of the asset. Once I've given the asset, you will use it. Whatever benefit you will be getting, that belongs to you. And direct the use of the asset. जैसे आपको यूज करना है आप यूज कर पाओगे. Understood the definition of control? Direct the use of the asset and substantial economic benefit. Yes sir. आपके पास अधिकार है. जैसे चाहिए आपको आप वैसे asset यूज कर सकते हो. There is no such problem. Yes sir. Now coming to the next term everyone, of an identified asset. Now what does the term identified means? Let us understand. Coming to the whiteboard everyone. See everyone, मैं लेसर हूं. मैं कौन हूं? लेसर. मेरे पास let's say मुंबई में I have 10 properties every year. है नहीं बाबा? ठीक है. An example. I have 15 properties in Mumbai everyone. आप लोग आते हो कि सर अभी मुंबई में जॉब लग गई है, हमको ये प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए, भाड़े पर चाहिए. नाउ एवरीवन आई नो कि ओके आप लोग मेरे स्टूडेंट ही रह चुके हैं, तो मैं बोलूंगा ओके आई विल गिव यू द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, दिस विल बी द रेंट. यस सर, आप ले लो प्रॉपर्टी रेंट पर, यू टेक इट. Here when I mentioned that you take the property on rent, did I specify which building I will be giving you, which flat etc? नहीं. Is that identified? नहीं. तो मैं क्या बोलूंगा? I will say okay the building number 3 in this flat number 2 you will be taking this on rent. Can I say it is identified or not? अरे मैंने स्पेसिफाई किया ना, ये आपका फ्लैट है, इसका भाड़ा आपको देना पड़ेगा, you will be living here. Understood what does identified asset means? जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ना, I will mention in that this is the flat number, here you will be living and this much is the rent you will be paying. If I will not write in the contract, after 2 days you will come and you will say कि सर ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये सी वाला फेसिंग है. सर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं था, आपने बोला भाड़े पर दोगे घर, तो tomorrow you will come and you will fight with me, sir give this flat. I will say how can I give, the rent is this much only, but you say sir in the contract it was written that you will give me a flat. But I will also be smart. What will I do? मैं asset को identify करूंगा. समझ में आया सबको? Yes sir. This is clear to everyone. Now see everyone. Let's say आप लोगों ने बोला कि क्या कि सर हमको ये जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है ना, this is sea facing, we need this for rent and you mentioned that how much you'll pay me rent? $10,000. Today you came, you mentioned ki sir I need this sea facing. I mentioned okay baba give me 10,000 per month and take this flat. Now what happened everyone? After 2 months, or not after 2 months, let's say after 2 weeks, one of your friend is coming, आपका कोई दोस्त आ रहा है और वो क्या बोल रहा है कि सर आपने घर उसको दिया, वो घर मेरे को चाहिए, I will pay a rent of 15,000. I have given this to you everyone, you are paying me $10,000. After 2 weeks some of your friend or some of the other person or any other person is coming, they are saying कि सर इसका कितना देंगे हम लोग?
15,000. Now everyone, what will I do as a owner? What will I do as a owner? आप ट्राई करोगे देने का, बट वो ऑलरेडी आप दे चुके हो तो नहीं दे पाओगे. Yes, what will I do? I will say what? अरे घर खाली करो, मेरे को कोई ज्यादा भाड़ा दे रहा है. आई विल बी सेल्फिश. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना लाइफ में, थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा. सिंपल रूल है. बट सो आई आपने विल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया क्या पहले? तो कॉन्ट्रैक्ट किया था. कॉन्ट्रैक्ट में अभी 2 गुंडे को बुलाऊंगा, खाली करा दूंगा घर, क्या लगता है? नहीं ना. वो गुंडे को $1,000 दिया, ₹80,000. ही विल बी वेरी हैप्पी. और ₹90,000. मैं बोलूँ घर खाली करवा के दे. सिंपल ना. बट लीगल इज नॉट पॉसिबल. लीगली अभी मैं बोलूंगा कोर्ट के चक्कर मारोगे करोगे तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, सर मेरी अभी जॉब लगी, मेरे को काम पर फोकस करना है. तो व्हाट विल यू डू एवरीवन? विल से कि सर चलो सर कोई दूसरा फ्लैट देखते हैं. बहुत सारे फ्लैट है मुंबई में, एक ही तो फ्लैट नहीं है ना. दैट इज नॉट वन फ्लैट, दैट आर मल्टीपल थिंग. एवरीवन अंडरस्टैंड. उधर तक जाने की जरूरत ही नहीं है. लीगल केस एक्सेट्रा वो अलग बात है. बिफोर दैट ओनली एवरीवन, एज अ ओनर, I am saying you to vacate this property because someone else is giving me a higher rent, मोर. more rent. Now, in this case, everyone, will you say the asset is identified? No. Jab I can do what? As a lessor, what can I do? I can ask you to what? Substitute the asset. I say, ये फ्लैट मत ले, ये ले ले बाबा. आपने बोला ना कि सर फ्लैट, आई से प्लीज वेकेट दिस फ्लैट, टेक दी फ्लोर नंबर 3 और 3rd फ्लोर 4th फ्लोर एक्सेट्रा और शिफ्ट टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट और द न्यू बिल्डिंग. सो कैन आई से मैं लेसर हूं, आई हैव सब्सटीट्यूशन राइट. जब मैं बोलूंगा आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इज द एसेट आइडेंटिफाइड? नो. व्हेन एज अ लेसर, अगर लेसर के पास सब्सटीट्यूशन राइट मींस व्हाट? व्हेन द लेसर, मैं जब बोलूंगा आपको फ्लैट चेंज करना पड़ेगा, तो इन दैट केस विल द एसेट बी आइडेंटिफाइड? नो. अगर एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है तो लीज होगा क्या? नहीं होगा सर. इट विल नॉट बी एवरीवन. बट लेट्स टेक एन एग्जांपल एवरीवन. Again, taking the example, this was your house, sea facing house. It's 2 weeks you are living in this house. Now there was a problem in this house, everyone. Pani ka problem hai, water leakage is there, etc. Yes. So now I say what, everyone? I say please shift to the this flat. Now if I'm saying you to shift to the other flat, in this case this substitution is done for your benefit or for my benefit? Our benefit. Your benefit. Arey, understand, there are two cases. I ask you to substitute the flat for my benefit, or the substitution is done because of your benefit. If the substitution is done for my benefit, the asset is not identified. If the substitute is done for your benefit, the asset is what? Identified. Very important question. ये 2 points से आएगा. If the lesser has substitution right, if the lesser has substitution right, and the substitution is done because there is a problem in the building or the problem in the asset, can I say the asset is identified? If I do the substitution because मेरा benefit हो रहा है, in that case it is not an identified asset. इसका मतलब ये हुआ कि लेसर अपनी मर्जी से जो लेसी को कहीं भी चेंज कर सकता है. लाइक एयरपोर्ट में कोई वो एक तो है ना, क्या कहते हैं, कोई स्टॉल लगा रखा है, कभी वो वहां से चेंज कर देते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पर लेसी का राइट वो नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. वो वहां पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो चेंज कर देती है अपने हिसाब से. ऐसा तो सर वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ सर. क्यों? Identified एयरपोर्ट जगह अथॉरिटी इज डूइंग फॉर देयर बेनिफिट और नॉट? यस. But airport authorities think there is a problem here. You can't keep this solved. Then it's okay. So you have to see. See, मैं lesser हूं. I am the lesser. Yes or no? I am saying what? I am saying that I can substitute the asset whenever I want. That means did I transfer the control? अरे मैंने कंट्रोल ट्रांसफर किया नहीं. आप here I am directing. जैसे मैं बोलूंगा आपको नाचना पड़ेगा. Yes or no? जैसे हॉस्टल में भी होता है सर. हाँ, इधर से उधर चेंज कर देते, हॉस्टल में भी चेंज कर देते ना. हाँ, समझ में आया. That is the reason जब हॉस्टल में से होता है, we see the contract etc. It's in from a judgmental point of view. In the case it will be specified. Thing like that. मैं lesser हूं. Whenever I say that you have to substitute the asset, that means the asset is not identified, control is not transferred because you do not have the direct to use the asset, Baba. Yes, sir. But everyone, I say that I will substitute the asset if you have a problem in that property. In that case, it will become what? Identified asset. Yes, sir. So, aa jao now here, everyone. See here. Please, everyone.
Read this one which I have written in red color here, everyone. सर ये लास्ट लाइन वाली थोड़ी सी समझाना। In case of substitution, मैं substitution कब कर सकता हूँ? When repair is necessary or leakage is there, any problem is there with the asset. तो मैं substitution करूंगा तो वो asset identified हुआ. ओके Everyone understood these 2 points? Yes? चलो आ जाओ इधर भी देखो. ये एग्जाम्पल क्या हुआ? I need a car on rent. ये क्या बोल रहा है इंसान जो कोर्ट में कि टेक एनी कार, इज द एसेट आइडेंटिफाइड? नो Here the person is saying take this car which has a number of 400 piece. Is the asset identified? Yes. Yes. Now आ जाओ. Substitution, right? Car is given to you for 10,000. Tomorrow other person is coming and saying I need the same car for 20,000. In this case, will the asset be identified? Substitution right, that is not possible. Not possible. But I say I had given the car to you on rent, but suddenly the car is not working. Can I say I will say what? Take some other car. In that case, will the asset be identified or not? Yes, sir. Can Yes. the lessor do for his own benefit? Can the lessor do for his own benefit? Never, Papa. No, No. sir. No, sir. Simple. यही याद रखना एग्जाम. Yes, sir. सर ये हो गया. Now चलो everyone. Now everyone, the last I mentioned ना एक point हो गया था. That is identified as a control. Now in control we have further one point. Everyone please read this. मतलब ये पिक्चर देखो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Restrictions have been imposed on the use of the asset. Okay, if the restriction is that, can you still say you have control? Yes. 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 Everyone, मेरी कार है BMW. I have purchased this car for 1 CR. I have given this to you all on rent. I say do not take this car to Iran now. Why? क्या चल रहा है उधर? War चल रहा है? War. So can I say when I'm saying that do not take this car to Iran or outside India, that will be problem. Can I say it is a benefit for you also? It is a benefit for me also, na? Yeah. Am I restricting you? अरे मैं आपको restrict नहीं कर रहा हूँ. I am protecting myself and protecting you. So even though protective rights are there, that means what? Control is still transferred. आपके पास control है. अभी मैंने क्या बोला है कि ये कार है. Do not take this outside India. Do you have control, everyone? Yes, you have control. ये क्या हुआ? This is protective rights. You can use the asset however you want, wherever you want within India, but not outside India. Specifically, 1 or 2 countries where war is going on. So in that case, if in the question they have mentioned that the lessor has given the asset to the lessee and they are saying that they can't use this car for more than 15,000 kilometer, 20,000 kilometer, that does not mean control is not transferred. Control is transferred, but what is there in between? Protective rights is there. What is there, everyone? Protective rights. समझ में आया सबको? Yes, sir. Now चलो एक एग्जांपल दूंगा, तुमको याद हो जाएगा, फिट हो जाएगा. ये कौन है? रिंकू. ये कौन है? पिंकी. कौन है? पिंकी. क्या होगा रिलेशनशिप इन दोनों का? क्या लगता है तुम लोगों का? भाई बहन अरे भाई बहन क्या? क्या सोचते हो? ये रिंकू है, पिंकी है. ये कौन हुआ? अच्छा अच्छा है कि नहीं? अरे नाम भी ऐसे लिया तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना. रिंकू इज दैट, पिंकी इज दैट. दोनों क्या है? रिलेशनशिप. नींद आ रही थी गर्लफ्रेंड इसलिए। बॉयफ्रेंड. यस सर. नाउ एवरीवन, पिंकी इज सेइंग व्हाट? पिंकी इज सेइंग व्हाट? अरे टुडे संडे, लेट्स से नेक्स्ट वीक संडे वी हैव अ पार्टी where we all the friends from the class 11 10th का जो आपका ग्रुप था, we are meeting. So can I say will Rinku allow to Pinky to go? क्या लगता है तुम लोगों को? क्या लगता है? Pinky is saying to Rinku that the coming Sunday we
our classmates are meeting and we'll be having a party at this hotel XYZ. So everyone will be coming, boys, girls, etc. XYZ. So what will Rinku say? Will Rinku allow? What do you think, everyone? No. नो अबे नहीं अलाउ करेगा तो बोलेगी चाहिए ही नहीं, चलो टाटा बाय बाय। रिंकू को भी थोड़ा डर है, रिंकू को भी थोड़ा डर है। रिंकू ऑल्सो हैज अ फियर। रिंकू विल से व्हाट? रिंकू विल से टू पिंकी, ओके गो बाबा, आई विल नॉट से नो टू यू। अगर नो बोलेगा उसको मालूम है, उसको तकलीफ होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। सो रिंकू विल से ओके यू गो, यू एंजॉय, but make sure that you will not go on a date with some other guy, etc. XYZ. Be with your friends only, not with boys. Yes or no? ये कौन सा right हुआ? Protective right, ना? Understood everyone? But still what? Rinku and Pinky are what in relationship, ना? Can we say yes or no? But understood everyone? अभी याद होगा कि नहीं ये तुम लोगों को? Protective rights. Clear सब लोग? गर्लफ्रेंड को भेज दिया लेकिन दूसरे के साथ डेट नहीं करने का, तो प्रोटेक्टिव राइट। यस सर। अभी किसको और थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने इस चैनल से लिंक करना, यू कैन लिंक इट, आई नॉट गो फर्दर। बस इतना मेरा काम हो गया समझाना। सब लोगों को डेफिनेशन समझ में आया? यस यस। सो एवरीवन, सी एवरीवन नाउ, सो इफ बिफोर you satisfy the condition of lease, the persons are known as what? Supplier and customer. पहले कौन होता है? Supplier और customer. If the definition is met, it will become what? Lessor and lessee. So everyone, please repeat. What is lease? A contract that conveys what? Right to control the use of what? Identified asset. For what? Specified period of time. In exchange for consideration. Yes, sir. Sir, lessor can have what? Protective rights, sir. राइट टू कंट्रोल मीन्स व्हाट? आपके पास अधिकार है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हो एसेट। यस सर। सर, कैन सब्स्टिट्यूशन बी डन? यस, व्हेन रिपेयर इज नेसेसरी। हाँ जी चलो। सो विद दिस एवरीवन, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन डेफिनेशन। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन एवरीवन। सो देखो एवरीवन, आई हैड मेंशन्ड द टाइप 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम द लीज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर? यस सर। सो एवरीवन प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड से मी what do you think whether IFRS 16 will apply or not leases. Everyone, you have written the heading, write down the definition. सब लोग definition लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट सॉल्व। पढ़ो क्वेश्चन और बताओ। अरे मैंने क्या बोला है? व्हेन कमिंग टू एसबीआर सब स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड्स आता है, बट दिक्कत किधर होता है? व्हेन कमिंग टू फ्रेमिंग द आंसर। few months back I received a call from a student. he SBR उसका 5th attempt था। कौन सा attempt? 5th. for the past 1 year is giving SBR. when I asked him the question regarding what standards, उसको पूरा डिटेल में नॉलेज है। when he mentioned कि सर मेरे को सब कुछ आता है, I know each and everything in detail, every standard he knows in detail, tricky points also, but the issue he mentioned, he used to score 43, 44, 48, 49. The issue was with practice. He was not able to frame the answer properly. उसको standard सब कुछ आता था, he was knowing each and everything, but he was not able to frame the answer properly. That's very important everyone. आंसर कैसे फ्रेम करना, क्या करना, वो इंपॉर्टेंट है। So everyone say me, is this a lease or not a lease? Yes, Altamash is saying it's a lease. Sir, not a lease. Not a lease, okay. Not a lease. Manit is saying not a lease, sir. अरे मैंने बोल्ड भी किया, हाईलाइट भी किया है। एवरीवन, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं पहले ये बताओ। कॉन्ट्रैक्ट है सर। नाउ एवरीवन, No, sir. no contract. Contract does not mean it should be in writing only. It can be what? Oral also. और कॉन्ट्रैक्ट तो है बट वो स्पेसिफाइड नहीं Is है। the asset specified? चाहिए वो तो स्पेसिफाइड है। Yes sir. or no? Is the asset specified or not, Baba? Yes, sir. So I Specified. mentioned the questions are from 2 points. Specified or control? Specified है कि नहीं? अभी कंट्रोल है क्या तुम लोगों के पास? See, No, sir. No, कंट्रोल sir. नहीं है सर। control देखो everyone. Let me read. AB company enters into a contract with R to transport goods from L to E. Yes, sir.
The using a specified truck. Yes, sir. Specified तो है. The goods will occupy substantially all the capacity of the truck. Now, can I say you are able to take the entire benefit? हाँ जी sir. Everyone here, who is the lesser, who is the lessee? पहले ये बताओ मुझे बताओ. Sir, RH Limited is lesser and AB is R greater. limited who's who? Lessee. Lesser. AB limited कौन है? लेसी Lessee. अरे कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट Sir. है तो now R limited. Now see. Okay, lessee is taking entire benefit because पूरा ट्रक भर गया है. अभी पूरा ट्रक भर गया है तो उसका ही तो बेनिफिट हुआ. हाँ जी. The contract specifies pickup and delivery dates and the exact goods to be transferred. Yes, sir. Then RH, that is means R Limited, is responsible for operating and maintaining the truck and for ensuring safe delivery of the goods. Okay, मैं ट्रक चलाऊं कोई दिक्कत नहीं. But everyone in the definition of control, there were 2 points: substantial economic benefit and what? Right to direct the use of the asset. Now see here, AB company is not allowed to operate the truck itself. So if AB company is not allowed to operate the truck itself, do they have direct to use the asset? हाँ, No. जैसे No. उनको चाहिए वो वैसे यूज कर सकते क्या? नहीं. नहीं If they can't use, will this be a lease contract? नो No. See, AB company इधर नीचे लिखा हुआ, तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मिल गया. AB company cannot change the route schedule. जैसा मेरा मर्जी होगा वैसे मैं यूज नहीं करूंगा. मैं यूज नहीं कर सकता. Whatever the other person is saying, I have to dance according to that only. That means, do I have freedom? No freedom, nothing. नो So here in this case, what it will be? It is not a lease. Hardly identified asset. Identified asset, substitution right, protective rights आपको दिखना है. कंट्रोल में क्या दिखना है? Substantial economic benefit and direct the use. ये तो direct the use of the asset is very, very important. There are 2 past papers regarding this single term. Direct to use the asset means what? You can plan. जैसे आपको यूज करना वैसे आप यूज कर सकते हो. अगर मैंने फोन आपको दिया है, I say that you should not use this phone. Do you have control? No. You say कि सर मैं 12 बजे 3 बजे 4 बजे भी फोन यूज करूंगा. That means you have the control. Yes, sir. So now, report based on the guidance in IFRS 16, assess whether this contract contains a lease. This contract contains a lease or not, everyone? Not a. नॉट प्लीज So how will you start your answer, everyone? As per? IFRS 16 Yes, everyone write down. So let's say the question is for 5 marks. We'll be writing 5 important points, not more than that. Hardly 6 mark का क्वेश्चन आएगा. सर Yes. सर ये जो थर्ड पॉइंट है जिसमें कि ऑपरेट हम नहीं कर सकते, इसको प्रोटेक्टिव राइट्स नहीं मान सकते हैं कि हो सकता है कि सर ये वो वाला प्रोटेक्टिव है, बट ये वाला ये शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा है, ये हाँ नहीं सर change हो रहा है. लास्ट पॉइंट से ज्यादा क्लियर है कि वो हाँ, डायरेक्शन इसलिए तो बोलते पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. ये प्रोटेक्टिव राइट्स है एवरीवन. दिस इज व्हाट. अरे मेरे को डर है कि तुम, अगर तुम लोगों को दूंगा तो तुम ट्रक ही उड़ा दोगे, तो मेरा नुकसान हुआ ना. तो हाँ बट सर हमें ट्रक चलाना ही नहीं आता होगा तो फिर हाँ, as per IFRS 16, lease is a contract. Lease is a contract that conveys the right to control the use of an identified asset for a specified period of time in exchange for सर एग्जाम में पूरा याद नहीं आया. पूरा याद नहीं आया तो जो केस से रिलेटेड वो तो लिखो बाबा, बेर मिनिमम. यस सर. इन द गिवन केस, ये बहुत लाइट दिख रहा है ना तुम लोगों को, मैं ऊपर लिखता हूँ बेटर. in the in the given case, the asset is identified. Yes or no? Asset is identified. That is a
Specified truck, sir. Yes, sir. A specified truck. A specified truck. AB company gets all the future economic benefits. So future economic benefit तो पूरा मिल रहा है. Future economic, I'm linking to the case, everyone. Future economic benefit from using the truck. That is what, everyone. Case in the case they are mentioned, goods will occupy substantial. Goods will occupy substantially. ये लिखा ना? Yes. Substantially all the capacity of the truck. I've linked to this also. The benefit is taken, but control nahi hai. AB company is not allowed to operate the truck itself, and also not allowed to change the route, schedule, AB company is not allowed to operate the truck itself and also not allowed to change the route and schedule. That means AB company does not have what, everyone? Does not direct the use of the asset. Does not direct the use of the asset. Does not direct the use of the asset. The important point is this one, everyone. So now I'll give the conclusion, everyone. That means what? Contract does not convey the right to control the asset. Therefore, it's not a lease. It's not a lease contract as per IFRS 16. I hope everyone understood how should you frame the answer here. How should you frame the answer? That is clear to everyone. Everyone done online, students, please confirm. Yes. Sir, in exam, if we only mention last point like schedule, purpose and route, so उससे भी तो establish हो ही जाएगा कि हाँ, control yes. थोड़ा link करना बस, वो important है. If सर you're क्योंकि not, एग्जाम में अगर मुझे ऐसा लग गया कि ऑपरेटिंग वाला जो पॉइंट है वो प्रोटेक्टिव है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ. हाँ मत लिखो. अगर ज्यादा ही आपको डाउट आ रहा है कि सर कई को फालतू का कंफ्यूज करके आंसर लिखना, तो राइट डाउन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. कोई इशू नहीं. Everyone done? Yes, sir. Yes. चलो, Done. प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार हरी ने जैसे बोला था वही एग्जांपल लिया हमने एयरपोर्ट का.
अभी ये लिखेंगे नहीं, ये आप डिस्कस करेंगे। ये लिखवा दिया। सर यस, सर यहाँ पे तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एसेट है नहीं, और सब्स्टिट्यूशन राइट भी बेनिफिट है लेसर के लिए। पढ़ो पढ़ो, आंसर नहीं पढ़ो एक तो। ओके, This is not a lease. इज दिस अ लीज एवरीवन? नो No. सर। नो, व्हाई? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन विल बी गिविंग? सर लेसर अपने बेनिफिट के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता है, स्पेसिफाइड एसेट भी नहीं है। इज दिस अ स्पेसिफाइड एसेट? नो Identified सर। asset? No, sir. नो। No. Then the operator No. can change the location for the space allocated to C at any time during the period of use. Can I say they are changing the place? Why? For their benefit? Yes or no? Now अभी change Yes. करने के लिए, अगर everyone today I say that please change the property and shift to the other one, please change the property and shift to the other one. Can I say, if I'm saying you, can I say मेरे लिए, and the cost that the air operator, the airport operator would incur to do this would be minimal. अगर मैं आपको शिफ्ट कराऊंगा तो मेरे को भी खर्चा होगा कि नहीं? वो खर्चा बड़ा है कि छोटा है? होता है। Everyone, when I say you to छोटा। shift, you will say what कि सर शिफ्ट होने के लिए पैसा तो दे दो मेरे को, जो शिफ्टिंग का कॉस्ट है वो बहुत छोटा है, 1000 2000. So can I say it is for my benefit or not? It is a small cost. So what will I do? I will say substitute, Baba. Everyone in this place only, if to substitute the place my cost was more, will I say you to substitute? मेरा खर्चा ज्यादा होगा तो No. मैं बोलूंगा कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करो? नहीं। नहीं। Go with common sense, everyone. If I say to substitute, I have a cost and my cost is significant, will you substitute? No. No. Will I say you to substitute? I'll say why should I incur No. so much loss and say you to substitute? नहीं चाहिए, चलो Yes. बाढ़ में गया. So here, is this a lease? This is not lease. नो सर। Not a lease. And you can mention here what is the new linkage, everyone. नया पॉइंट क्या सीखा आप लोगों ने कि सर the cost which airport operator will include or will incur is what? Minimal. Minimal. So can I say he will say to the lessee की substitute कर चल बाबा, मेरा खर्चा कुछ नहीं, चाय पानी का खर्चा लग रहा है, चलो कोई नहीं करवा देते इसको. Yes sir. Understood? See the answer now, everyone. 5 points. A lease is a contract that conveys the right to control identify. Yes, sir. The contract does not contain a lease because there is no identified asset. The contract is for space in airport and the airport operator has the practical right to substitute. Yes, sir. Because there are many places available in this, etc. etc. The airport operator would benefit economically from substituting the space because there would be a minimal cost. उसको benefit होना चाहिए. अगर खर्चा ज्यादा होगा तो उसको benefit होगा क्या? नहीं. Substituting would allow the operator to make the most effective use of the available space, thus maximizing profit. We say it is a lease. Clear, everyone? Everyone clear? Online students, please confirm. Yes, sir. Chalo, everyone. The next question. This is a past paper, everyone. This is a past paper which is not there in your Kaplan kit, but I've taken a old past paper, which is a very good question. 6 mark का question था. It's not 6 7, 5 mark question. अभी है नहीं Kaplan की book में. It is in the old Kaplan book. So please do it. ये आपको टाइप करना है एक्सेल पर. Must do on Excel. I've written in the list also the past papers to be done. सर पढ़ो पढ़ो पढ़ो. 5 मिनट में 5 मार्क का क्वेश्चन में 10 minutes. Hardly 2 minutes for reading the question and framing the सर answer in your mind. सर इसमें सर क्रेन तो स्पेसिफाइड नहीं है, बट प्रैक्टिकल राइट भी नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, तो ये मान लेंगे कि So this is a स्पेसिफाइड। lease.
Contract is signed. सर इसमें कोई स्पेसिफिक क्रेन तो स्पेसिफाई नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन राइट भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको मतलब आइडेंटिफाइड एसेट ही मान लेंगे क्या? मेरे को आंसर चाहिए, तुम लोगों को मैंने पढ़ा दिया ना, आंसर बताओ बस। सर डिस्कस है तो दोनों साइड से लिख सकते हैं। हाँ डिस्कस, ओके यू कैन राइट डाउन, बट क्वेश्चन में मैंने 3 वर्ड हाईलाइट किए प्रॉपर से, उससे आप कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो। सर उस हिसाब से तो है कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मतलब लीज है। अदर्स व्हाट डू यू थिंक? Sir, this is a lease because the substitution is taking with a significant cost. Yes, if substitution is taking significant cost, everyone, Cost. will the lesser do? लेसर बोलेगा चाय पानी का खर्चा नहीं लग रहा अभी, पूरे शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा इधर अभी, तो करेगा क्या वो? लेकिन नहीं बाबा नहीं। So see everyone now, on 31st December 2001, A signed a contract to use the crane for the next 5 years. Yes, sir. The supplier of the crane is permitted to substitute the crane for an alternative model during the period of use, but would incur what? Significant cost to do so. The contract states that A can use the crane for any construction activity. Can I say they have the direct to use the asset or not? ये आपको लिंक करना बाबा। You can mention that control is there because direct substitution is also not allowed. Even though it is allowed, the lessor will not substitute because substitution cost is more. However, the crane cannot be used if wind speed exceed. ये क्या है? What is this, everyone? Protective right. So will protective rights affect your this one? Will protective rights affect the definition of control? No. No, you No. have to link to the case and write down. If you just write down, sir, it is not a lease, examiner will give you 2 marks, not the entire 5 marks. You have to mention that a company can direct the use of the asset because they can use for any construction activities. Even though, the next one, even though the crane cannot be used if wind speed exceeds 14 meters per second, this will not restrict the control as it is protective rights. 2 points, main point done. Then the third point I'll say, here in the given case, the lessor has the substitution right, but the lessor will not substitute because the cost is high. So therefore, this is what? This contains a lease. Definition, these 3 points, done, 5 points. Clear everyone? सबको definition से clear हुआ? ताबिश clear? पक्का? On insurance, the first type of question clear? Yes, 5 question है exam kit में. अभी जो 5 क्वेश्चन है तीनों में सेम पॉइंट्स है. The 5 question which will be doing out of that one, I've already discussed 4 questions you have to do. Yes, sir. So, chalo everyone, sir, definition is done. Basic example we have done. Now, everyone coming to what? Measurement. Sir, recognition क्या होगा? Recognition, if the definition is satisfied, you record it as a ROU and what everyone? Lease. Yes, sir. Now, see everyone, let me show you. Let me show you कि एग्जाम में कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. आप लोग ही बोलोगे कि सर इतना इजी आता है क्या क्वेश्चन एग्जाम में? You only will say me कि sir this easy will come sir, then that means for sure we will pass the exam. हाँ Benito. When was this question tested everyone? Benito, September, December 2023. This. So see everyone. मैंने सितंबर दिसंबर में दिया था एग्जाम, मेरे को नहीं आया था क्वेश्चन. See everyone, the requirement is for how many marks? 9. And what they have written below? What they have written? Should you refer to any exhibit? No. No. No linkage in scenario. Straightforward question everyone. This is relating to what? Sale and leaseback. अरे सेल एंड लीजबैक का क्वेश्चन है, बट देख पा रहे हो कि डायरेक्ट 9 मार्क क्वेश्चन पूरा टेक्निकल निकला था इसमें. You have to write down everything as technical, 9 marks straightforward question. And then if you see the calculation for 7 marks of sale and leaseback, तो कितना हुआ? 16 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड. आउट ऑफ 100 मार्क्स 16 marks was straightforward question. Sir, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम? Yes, it comes. If you do mistake here, if you're not able to attend this, that means the chances of passing the exam will reduce. Now, sir, how we will get to know in the exam? You have to identify, you have to read the question. समझना पड़ेगा कि सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते. हर अटेम्प्ट में 10 to 15 marks will be direct straightforward. If you do mistake there, if you're not able to attend, it will be a problem. पहले ही बता रहा हूँ. Yes, sir.
तो चलो ना, let us come and let us start the other point of view. Everyone now make the heading initial measurement and subsequent measurement. Everyone, please make this initial measurement and subsequent measurement in your books. Write down the next topic as initial measurement and subsequent measurement. Initial measurement and subsequent measurement. I'll come to that बेटे. Exhibit का मीनिंग क्या होता है? अरे मैं तुमको डे 1 पर बताया था ना, पेपर पैटर्न की नहीं बताया? पेपर पैटर्न बताया, ये नहीं पता ना, वो पोर्टल का दिक्कत था. ओके, मैं बताऊंगा. आई विल शो एवरीवन, टेंशन मत लो, ठीक है. आई विल कम टू दैट. एग्जिबिट का मीनिंग क्या होता है, एक्सेट्रा एक्स वाई. या लास्ट टाइम आई ट्राइड फॉर 2 क्लास बट द पोर्टल देयर वाज सम इशू, बट अभी चल रहा है. आई विल शो इट टुडे. ओके, एग्जिबिट मींस सेपरेट पार्ट विल बी गिवन. बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें छोटे 4 पार्ट रहेंगे और 4 पार्ट का चारों क्वेश्चन अलग होंगे. सिंपल. यस. So everyone, initial measurement and subsequent measurement. Everyone done writing? Yes. Everyone, please write down this first point. On the commencement of the lease, lessee should recognize the lease liability and ROU. Lessee should recognize the lease liability and ROU. Lessee should recognize lease liability and ROU. Whenever a question comes regarding accounting, अगर क्वेश्चन में बोला है explain and calculate, then first point will be this one. As per IFRS 60, excuse me, the lessee will record ROU and lease liability. The lessee will recognize ROU and lease liability. Now everyone, the discussion will be little bit heavy. You have to understand, because there are multiple small points which we have to understand, which comes in the exam, and we will do a exam kit question or exam style question also कि कैसे questions आता है घुमा फिरा के. Done everyone? Now you have written the heading or not? You have written on the commencement, lessee will recognize ROU lease liability. Everyone make 2 columns, ROU and lease liability. 2 column बना दो. On one side, on your left hand side ROU, on the right hand side lease liability, or lease liability or ROU, जैसे भी आपको लिखना है. Because there are 5 points which you have to understand here. Then everyone writing? हो गया? हाँ जी सर, हो गया. चलो. See now everyone, first we'll understand from the lease liability point of view, because questions are, everyone understand this properly, because this topic will again repeat in remeasurement. हाँ जी, आ जाओ. Everyone, when I mention lease payment includes what all? Everyone देखो. Everyone, what was the payment you paid? आप हर साल मुझे कितना पे कर रहे थे? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Will you include this in lease liability calculation? Yes sir. ये कौन सा पेमेंट हुआ? Is this fixed payment or variable payment? Everyone, it's fixed. Yes. Fixed payment. अरे सर, इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें easy है. Then today I have done a contract. I say you have to pay 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000. आज ही मैंने बोला है. Is this fixed or variable? Variable. Fixed sir. Fixed. आज ही बोला है, इतना पे करना है. I mentioned today Fixed. only you have to pay this much. Then what? Then fixed. Fixed. अरे fix or not everyone? Today only I mentioned Fixed. 10,000, 12,000, 13, 14. What is this? Fixed. Fixed. अरे variable मत बोलना बाबा इसको अभी. Yes, fixed. So everyone, what will you include first? Sir, in lease liability, can I say the first type of payment is what? Fixed payment. Fixed payment less any incentive. Less any incentive. आज ही मैंने बोला है कि okay, this is the payment everyone. I say here in the 3rd year I have given you a benefit of 1,000. मैंने आपको incentive दिया. मैं कितने का incentive दूंगा आपको? 1,000. Means आपको फायदा कराऊंगा. कितने का फायदा कराऊंगा? 1,000 का सर. So what is your payment here? 9,000. So understood everyone? So in the lease liability, write down the first one everyone.
fixed payment less incentive is the first payment which we will include in lease liability. Everyone, fixed payment less any incentive. Fixed payment less any incentive. Chota, make small notes, everyone. बैठ के पूरा notes मत बना. Anyone, if you have time and if you're making the summary notes of leases or any standard in one page, you can share in the group so that it will be easy for the others also to refer. Okay? अगर कोई बना रहा है एक पेज में समरी कि सर एक पेज में पूरा लिख दिया हम लोगों ने विद अ प्रॉपर हैंड राइटिंग, यू कैन शेयर इन द ग्रुप सो दैट अदर्स कैन आल्सो रेफर इट. ताबिश बोल रहा कि सर टाइम ही नहीं है हमको. इफ एनीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं इसे, बिकॉज आई हैड लास्ट टू लास्ट बैच आई हैड अ स्टूडेंट जिसने किया था ऐसे, बट मैंने नोट्स लिए नहीं थे बिकॉज वो इन दैट बैच एवरीवन पास द एग्जाम बिकॉज दे अटेंड गुड प्रैक्टिस एक्सेट्रा. उन्होंने बोला कि सर एक ही तक की प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस 40 to 45 क्वेश्चन, सब लोग पास हो गए थे. तो आप लोगों की भी बोलता हूँ बाबा प्रैक्टिस करो, पक्का हो जाएगा एग्जाम के लिए. एवरीवन डन विद फिक्स पेमेंट एवरीवन? यस सर, चलो आ जाओ. अरे तुम लोगों को रिवीजन करना बहुत इजी है, तुम लोगों को रिवीजन अगर तुम क्लास अच्छे से अटेंड करोगे. सी एवरीवन, आई हैव गिवन द आईफोन टू यू टू यूज. कैन आई से एवरी ईयर यू आर पेइंग हाउ मच? 5,005. इज दिस फिक्स पेमेंट? हाँ जी. Fixed. I say 5,000, 7,000, 9,000, 11,000. It is what? Fixed. Fixed. Looks variable, but what it is? Fixed, sir. Fixed. हाँ जी सर. Now everyone, variable payment everyone. Everyone ये थोड़ा पिक्चर देखो और try to understand. Question will come from this only. पहले ही बता रहा हूँ. Question will not be from fixed payment. Question will be from variable payment. अरे एग्जाम पास होना बहुत इजी है. सिलेबस डिफाइंड है, पॉइंट्स डिफाइंड है, जिससे जिधर से क्वेश्चन आता है वो अच्छे से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं. एंड अपॉन दैट प्रैक्टिस. क्या समझ में आ रहा है पिक्चर देख के? हाँ, पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि लीज ने लिया है, एवरी मंथ जब भी पेमेंट देगा तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से पेमेंट ज्यादा देगा. ओके. अदर्स व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर? मुझे मालूम है कि कुछ समझ में नहीं आया. कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा बाबा पिक्चर देख के. मार्केट कंडीशन पे पेमेंट चलेगा. हाँ, तो रेंटल एग्रीमेंट में भी होता है ना कि हर साल वो क्या? बढ़ाते जाते हैं महंगाई के हिसाब. Everyone, I say if the payment is based on inflation, you will include. If the payment is based on usage, you will not include. सर समझ में नहीं आया. चलो आ जाओ एग्जाम्पल लेते, सब समझ में. अभी थोड़ा टाइम लूंगा. आई विल टेक 5 to 6 minutes to explain because very very important point. See everyone. Now when I give the property to you on rent, everyone, every year I say that you have to pay how much? 10,000, 10,000. Now you only say everyone, if I've given the property today to you to pay me 10,000, 10,000, you will say कि sir pay तो कर देंगे, but can I say everyone it is a loss or not for me? अरे inflation बढ़ेगा कि नहीं market में? Everyone, if the inflation is increasing, can I say the rental expense also will increase or not? मैं ओनर हूं, मैं बोलूंगा कि अरे अभी 10,000, 10,000 का अग्रीमेंट कर दिया, कोई इशू नहीं. बट आई से एवरीवन, आई एम द लेसर, आई एम हैविंग अ लॉस बिकॉज some other party in future they will say कि sir we will pay you more etc. और inflation बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, property tax बढ़ रहा है etc. XYZ. So everyone, when I give the property to you on rent, everyone, I say that okay 10,000, 10,000 no issue. But I say every year this lease payment which you are paying everyone will be increased based on what? Inflation. जैसे जैसे inflation बढ़ेगा उतना आपका lease payment भी बढ़ेगा. तो in that case will you consider this or not? Yes, you will consider. Sir, कैसे consider करोगे? Do you know what is the inflation after 2 years, 3 years, 4 years? No. What will you do? You will estimate today. You will do what, everyone? You will estimate. You will estimate and you will say कि okay, this is it. Or CPI index, consumer price index. Every year, if the lease payment is increasing because of inflation, इसको क्या include करना है कि exclude करना है? Include. Yes, sir. Now coming to the next point, everyone, see everyone.
लेट्स से एवरीवन आई हैव अ मशीन, मेरे पास क्या है, मशीन, मैंने आपको लीज पर दिया। नाउ विद दिस मशीन आई से यू कैन मैन्युफैक्चर व्हाट ना, यू कैन मैन्युफैक्चर, लेट्स से क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हो मशीन, मेडिसिन, मैं मेडिसिन नहीं लेता, व्हाट वी कैन टेक, फोन ही ले लो सर, क्या, फोन ले लो। फोन, ओके चलो फोन, हाँ यस। मेरे पास एक मशीन है, आपको फोन का बिजनेस चालू करना, यू वांट टू स्टार्ट फोन बिजनेस, आई हैव गिवन दिस मशीन टू यू टू मैन्युफैक्चर फोन। ना आपने क्या बोला कि सर मैं फोन मैन्युफैक्चर करूंगा, एक फोन मैन्युफैक्चर करूंगा आपको 100 रुपीज दूंगा। आई मेंशन व्हाट, आई हैव गिवन द मशीन टू यू एंड यू आर मेंशनिंग कि सर आई विल मैन्युफैक्चर फोन्स एंड इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ फोन हाउ मच रेंट आई विल गिव यू, 100? Yes or no, everyone? Now, do I know on the day one how many iPhones you will manufacture? Nice, sir. No, na. If you will not manufacture only, will I get income? So, वो भी मेरा problem है. So, can I say everyone, this payment which you are getting is based on what? Usage of what? फोन। Machine. मेरे को पैसा कब मिलेगा? अगर तुम लोग यूज करोगे, अगर तुम लोगों ने यूज ही नहीं किया तो मेरे को कुछ मिलेगा क्या? नहीं। बट आपने क्या बोला कि सर वी गिव अ गारंटी, वी से कि वी विल प्रोड्यूस 10,000 आईफोन्स इन अ ईयर, बट इज इट फॉर श्योर? नहीं सर। सो एवरीवन, if you manufacture 10,000 iPhones, how much will I get? 10,000 into what? 100. How much is 100। that? 10 lakh, everyone? Yes, 1 million? Hanji, sir. Now, everyone, I gave the machine to you. If you manufacture 10,000 iPhone, मेरे को कितना मिलेगा? 10 लाख रुपीज और 1 मिलियन। बट आप लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? नहीं। नो। So this is based on usage. Will you include it? No. नो। You will not include. But can I say everyone to be on a safer side? What will I say? I will say कि आपको bare minimum you have to give me this amount. Bare minimum you have to give this amount. मैंने आपको मशीन दिया, आपको कितना देना पड़ेगा मेरे को? हर एक फोन पर कितना दोगे? पर फोन यू विल गिव 100, बट आई एम सेइंग वेदर यू मैन्युफैक्चर और नॉट, मेरे को कितना मिलना चाहिए? bare minimum 1 lakh. So this 1 lakh is what, everyone? In substance fixed. Yes or no? In substance fixed. ये payment fix है. Even though you will not manufacture, how much is the payment? I will get 1 lakh. If you manufacture 10,000 iPhones, I will get how much? 1 million. So which one will you include? Will you include this? No, Baba, Tata, bye bye. कौन सा include करोगे? In substance fix. In substance fix. Which you can't avoid. Can you avoid this 1 lakh? You can't. Can you avoid that remaining 9 lakh? Yes, you can avoid if you will not manufacture. So everyone make the second note. Variable payment is included based on CPI or inflation. Variable payment is included on CPI or index rate. Variable payment is included on CPI or index rate. Variable payment based on CPI inflation is included. In brackets, write down. Based on usage is not included. Based on usage is not included. Based on usage is not included. But fixed substance payment is included. In substance fixed payment is included. In substance fixed payment is included. In substance fixed payment is included. Everyone done? So what is the first cash flow you will discount? Fixed payment less incentive. So second one is what, sir? Variable payment only based on what, sir? Inflation, etc. Sir, if it is fixed, in substance fixed, we will include it. Yes, sir. So देखो everyone. Please, everyone, please see this picture. In the latest pre-mocks for the past 3 to 4 attempts, I've seen multiple questions regarding this one. And I'll take a pre-mock question also. Yes,
Manit sir. But you will not include that usage amount, that normal expense. You will not include that only. Only the fixed payment will be included, the minimum fixed payment. Please read this first. You will understand. Clarity आ जाएगा और ज़्यादा. This person has given this to this person. The person is saying, I'll pay 100 rupees per unit produced, but bare minimum कितना दूंगा मैं? 10,000. And he says, how many units you have produced? How many units? He's saying 1,000 into 100 कितना हुआ? 1 lakh? Yes, yes, sir. So out of that 1 lakh, everyone, what is the bare minimum fix? 10,000. That 10,000 will be included in the lease payment. So the remaining 90,000 you will record in P&L as what? As a expense. इसका कोई लेना देना है क्या लीज के साथ? कोई लेना देना नहीं है. जो भी गारंटीड दे रखा है वो हमारी लीज Yes, लायबिलिटी होगी. I was waiting कि Lease someone liability. will say this term, guaranteed. The Yeah. guaranteed amount will be part of lease payment. The remaining जो आप पे करोगे वो P&L में normal खर्चा Yeah. रिकॉर्ड करो as your class 11th Yes. and 12th accounting. Understood. Understood everyone? Question will come from this only. Yes, sir. Sir, we have done what? The major part is done, everyone. Where fixed payment, variable payment is done. You have written 2 points, yes, sir. Now coming to exercise purchase option, everyone. Now coming to what, everyone? Exercise purchase option. Now, sir, what does this mean, everyone? This is Ram. This is Raju. राम ने प्रॉपर्टी किसको दिया? राजू को. I am Ram, everyone. मैंने प्रॉपर्टी राजू को दिया. Now, when I gave this property to Raju, I gave this on 10 years lease. And राम ने राजू को क्या बोला? राम ने राजू को क्या बोला? That after 10 years, you can purchase this property. You can purchase this property for $10,000. तो मैंने किसको ऑप्शन दिया? राम ने किसको ऑप्शन दिया? राजू को ऑप्शन दिया. अभी राजू क्या करेगा? राजू कौन है? Let's see. तो राजू will include fixed payment, variable payment. Now, will Raju include this 10,000 at the end of the 10th year? हर साल क्या कर रहा? पेमेंट दे रहा. At the end of the 10th year, will he include this 10,000? I have given the option to you that you have the option to purchase the asset after 10 years. Now, everyone say me, will you include this 10,000 in your lease liability calculation? Yes. Yes. When? राजू पे डिपेंड करेगा कि कितना कंफर्म है वो. राजू पर डिपेंड करेगा. राइट किसके पास? राजू के पास. अगर राजू बोलेगा कि मैं परचेस करूंगा तो विल यू इंक्लूड? यस सर. राजू इज सेइंग आई विल नॉट परचेस, देन विल यू इंक्लूड? नो. एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस? नो ना. सो एवरीवन राइट डाउन द नेक्स्ट वन. एक्सरसाइजेबल परचेज ऑप्शन. एक्सरसाइजेबल परचेज ऑप्शन. इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन, मैं राजू हूं, मैं आंख बंद करूंगा और सोचूंगा कि 10 साल के बाद में मैं परचेस करूंगा क्या ये? हाँ मैं करूंगा, तो मैं इंक्लूड करूंगा. अरे नहीं करूंगा बाबा परचेस, तो मत इंक्लूड करो. डू नॉट इंक्लूड इट. डू नॉट इंक्लूड इट. यस सर. सो Sir, यस. that 10,000, whatever he's going to get it after 10 years. So हाँ. उसको lease liability में when we'll include, so उसका present value लेंगे. यस यस, सबका प्रेजेंट वैल्यू बेटा. सबका प्रेजेंट, जो भी बोलो सबका प्रेजेंट, पूरा स्टैंडर्ड प्रेजेंट वैल्यू पर. यस सर. So any doubts in the third one, everyone, which should we include? No, sir. Chalo that. Then everyone, next one, penalty. Write down the next one, everyone. Penalty. Write down the next one, penalty. Next one, penalty. लिख लिया सबने ना? आप लोग बताओ पेनल्टी कब पे करना पड़ेगा? राजू को मैंने दिया प्रॉपर्टी कितने साल के लिए? 10 साल के लिए. अभी राजू पेनल्टी कब पे करेगा? कहने से कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का किया था, तुम लोग पेनल्टी कब पे करोगे? व्हेन विल यू पे पेनल्टी? व्हेन यू ब्रेक द रूल. Lease is defaulted. When you break the rule. Raju mentioned I'll take 10 years. Now today Raju is saying कि बोल दिया 10 साल, but 10 साल के लिए यूज नहीं करूंगा. Raju is saying that I mentioned that I will use this for, Yes. let's say 5 years. He's saying what? Day one. He was planning that. That for how many years? 5 years. But today, after 1 or 2 days, he's saying, "Arey, 5 years is too much. I think I will use this for 3 years."
So in that case, what will happen? He will include 3 years payment, and what he will include? That I'll pay a penalty of 2000 and what? Exit the contract. And exit the contract. सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. So penalty when you include, if Raju is the Raju, सोचेगा थोड़ा बहुत, अकेले बैठ के सोचेगा. He will sit alone and he will decide whether I'll continue the business or not, whether I'll do it. Okay, I think I will take the asset for lease for 3 years, even though contract is for 5 years. If he thinks that he will exit, he will include. If not, no. This everything we are discussing from whom point of view? Lessor or lessee? Lessee. Lessee, yes sir. Everything will repeat in lessor's case. पहले ही बताओ. Yes. इसमें किसी को डाउट पेनल्टी के केस में? जैसे हमने एक रेंट पे ले लिया होम 1 ईयर के लिए, 12 मंथ के लिए, मेरे को दूसरा अच्छा रूम मिल गया, तो मैं इसको 2 महीने बाद खाली कर दूं, तो 1 मंथ का कुछ चार्ज करते हैं. हाँ, तो यही पेनल्टी हुआ ना. हाँ. अब पेनल्टी आएगा भी नहीं, एग्जाम फालतू का दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड में दिया हुआ है. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट एवरीवन. GRV. GRV, guaranteed residual value. GRV होगा. GRV, guaranteed residual value. जी सर. Can I start with the discussion of this now? चलो आ जाओ. अब राजू मत लेना सर. हाँ, सब राजू ही देगा. है कौन लेसी इधर? We are learning from लेसी. लेसी only will be paying. Yes. Everyone, let's take it. नाम चेंज कर दो सर, कोई स्टूडेंट का नाम ले लो. कोई स्टूडेंट का नाम राजू और राम और राजू बहुत पुराने हो गए. पुराने हो गए. लेट्स से किसका, हरि का एग्जांपल लेता हूं. हरि का ही लेते हैं. ये हरि का लेता हूं, ये सुकांत का लेता हूं. चलो ठीक है. अरे नहीं, ये मेरा लेता हूं. ठीक है, मैं ठीक है. एवरीवन, मैं कौन हूं? मैं हमेशा कौन हूंगा? लेस. अब लेजर. हाँ. दिस फोन इज विथ मी एवरीवन. ये नया आईफोन है. मैंने लेसी कौन है? Hari. Hari is the lessee. I have given this phone to Hari to use the asset. Now I have given this phone to Hari to use this for 5 years. Now I say Hari that every year he'll pay me how much? Let's say 2000 rupees. Every year 2000 rupees to use the iPhone. So this 2000 is what, everyone? Fixed payment or variable payment? Fixed payment, yes. Fixed. Now अभी Hari को ये phone दूंगा. I'll give this phone to Hari. Hari will say what? हरी विल से व्हाट? अरे सर का फोन ही है, जैसे चाहिए यूज कर दूंगा, खराब करके दे दूंगा. नहीं हरी? हाँ, ऐसा सोचेगा कि नहीं? सोचूंगा सर, क्योंकि मेरा है नहीं वो बात. यस यस और नो, यू थिंक इन दैट वे ओनली ना. जब आप लोग स्कूल में थे, व्हेन यू आर इन स्कूल, सर फीस देते स्कूल का सब बैंड बजाना. यस और नो? अरे हम लोग किया है. वो स्कूल से पर वो ड्रम रहता है, क्रिकेट बैट होता है, ये एवरीथिंग सबको खराब कर देते हैं. पैसा दिया है ना, वसूलना है. Yes or no? Hari will also have this mindset. Hari क्या बोलेगा? अरे this phone is given by राहुल सर, जैसा मर्जी होगा वैसा यूज करूंगा, खराब करके दे दूंगा. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है कि नहीं? कुछ भी नहीं. Can I say what will I do? मैं हरी से ज्यादा स्मार्ट हूं. मैं क्या? I am smarter than Hari. What will I do? In the contract, everyone, I'll include a clause. I'll say what, everyone? After 5 years, when you return the phone, it should be in what condition? Good condition. Good condition. अभी normally when I give a phone to anyone to use, can I say you will use it for in a good condition? Yes or no? Now this person or Hari saying कि sir I will not use it. Normally I say, everyone, देखो सुनो. Normally I say that if I purchase a new iPhone today for 2000, after 5 years if I use, I will get 1500. कितना मिलेगा मुझे? 1500. But when I gave this phone to Hari, Hari has used this phone and Hari has given back to me. Now, when Hari gave this phone back to me, if I'm selling in the market, I'm only getting $800. Why I am getting a lesser amount, everyone? मेरे को कम पैसा क्यों मिल रहा है? Normally, I should get 1500. I am getting 800. Because of depreciation. हाँ? Depreciate हो गया. नहीं, depreciate तो इधर भी हुआ होगा ना. You have used, normally when I use a phone after 5 years, if I sell, मेरे को 1500 मिलना चाहिए. That is the normal market Will condition. become a second-hand product. सर हरी भाई ठीक कंडीशन में नहीं लौटाए होंगे. Here also second hand only ना. Here also second hand only. Here क्या problem? I use गुड a phone. कंडीशन.
I use a phone after 5 years and I can sell and I get 1,500. बट मैंने किसी और को फोन दिया, वो जब रिटर्न कर रहा मेरे को 800 ही मिल रहा है, तो दिक्कत किधर हुआ? कंडीशन गुड नहीं। कंडीशन टाइम का Can I say Hari did not maintain the condition? So can I say today only I will include a clause in what? In the contract that Hari, अगर मेरे को मार्केट में पैसा कम मिलेगा तो जो डिफरेंस है कौन पे करेगा मेरे को? हरी हरी। कितना पे करेगा हरी मुझे? 700 700। That is what? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। समझ में आया सबको? व्हाट इज जीआरवी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीआरवी का मीनिंग पूछा, अभी तक मालूम नहीं रहता हूँ। अंडरस्टैंड दिस। This is like security deposit, right? Not security deposit. It's not security. Security deposit totally different. It's not a deposit. It's that I give him, I say him that my asset should be in proper condition. If my asset is not in proper condition, whatever value I'm not getting in the market, that difference you have to pay me. That difference you have to pay me. सर ये जीआरबी का वैल्यू हमें डे वन पे पता कैसे चलेगा? ये भी एस्टिमेट होगा एस्टिमेट क्या? सब तुक्का है, पूरा आईएएस आईएफएस तुक्के पर चलता है। हरी आज ही सोचेगा, हरी के मन में मालूम है कि ऐसा यूज करूंगा तो मेरे को मालूम है कि असेट का बैंड बजने वाला है, तो सर को पैसा देना पड़ेगा। और हरी विल से आई हैव गिवन टू माय एम्प्लॉयज टू यूज। हरी विल बी सेइंग, हरी नोज दैट ओके हिज एम्प्लॉयज आर नॉट गुड, सो हरी को मालूम है कि सर को देना पड़ेगा, सर छोड़ेंगे नहीं मेरे को। एस्टिमेट सब एस्टिमेट है बाबू, ये एस्टिमेट है। ये मालूम होगा क्या? Do you know when will you pay the penalty? Do you know whether you'll purchase the iPhone or not after 5 years? Sub estimate hai. Then at the end of the lease term, if you're able to sell the asset for 1,500 and not for 800, that difference of the extra amount of that 700 that has been paid or recorded, that will then be taken to the P&L? Then you'll reverse it, simple. Yes. Reverse it. Okay. Yes. अभी तक कुछ नहीं, अभी तो इसमें अभी आप लोग ही बताओ, एस्टिमेट विल चेंज और एस्टिमेट विल रिमेन सेम? चेंज सर। चेंज। Will change. एक साल के बाद में change. कैलकुलेशन ही पूरा चेंज हो जाएगा। आफ्टर 1 year एंटायर कैलकुलेशन विल चेंज, दैट इज नोन एज रीमेजरमेंट। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो पहले 5 टर्म तो समझ लो, धीरे धीरे उस पर आऊंगा मैं। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज जीआरवी? सर जीआरवी हाउ मच? 700। तो व्हाट इज दिस वन? 800 को क्या बोलते हैं? यूजीआरवी, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, सबको समझ में आया? तो गारंटीड, सी व्हाट इज द गारंटी? हरी विल से सी कि सर गारंटी आपको कितना पैसा मिलेगा? 1500 मिलेगा, बट नहीं मिल रहा है तो वो डिफरेंस कौन पे करेगा मुझे? हरी। सिंपल। यस सर। तो कैन आई से जीआरवी विल बी इंक्लूडेड? विल यू इंक्लूड यूजीआरवी एवरीवन? राइट डाउन, ब्रैकेट में लिखो यूजीआरवी नॉट इंक्लूडेड, कैंसल इट, कैंसल कर लो सब लोग। राइट डाउन दैट वेयर यू मेड द टेबल, you have made 2 table, right hand side, left hand side. GRV include, UGRV not. आता नहीं है एग्जाम में, पहले ही बताओ। I have never seen such a question. Only variable payment comes in the question. Everyone done from lease liability point of view? तो सब लोग रिपीट करो, पहला पेमेंट क्या था? सेकेंड Payment, variable payment based on Variable. CPI. देन Penalty. exercise, Purchase option. Exercise. then Penalty. then Guaranteed residual value. yes sir. Everyone done with this? Yes sir. Now the next column coming to ROU. Next column coming to ROU, everyone. So see everyone, now in ROU what all you will include. In ROU we have 4 points. The first one, what is everyone? The first one is lease payment only. Sab log likh lo. The first one is lease payment. The entire 5 things which you have discounted will be added to ROU. पूरा जो आपने डिस्काउंट किया ऊपर, the 5 points, entire thing will be added to ROU. Yes sir. लिख लिया सब लोगों ने? The second point is deposit paid before commencement. Someone mentioned na ki sir, is this deposit etc. Now we came to deposit. Deposit is included in ROU, not lease liability. Deposit paid before commencement.
deposit paid before commencement. Done everyone? Yes? अभी देखो समझो इधर आ जाओ. You have to understand two dates of lease, everyone. Date of lease. The first one is inception date and the other one is commencement date. Today, we have done an agreement that I give my property to you on rent. The day when you do the agreement is known as what? Inception date. After 2 weeks, after 3 weeks, or after 1 month, I give the property to you to use. That is known as what? Commencement date. सबको समझ में आया? Inception date means what? Commencement date means what? Inception date means what? The day when the contract is done. Commencement date means what? The date when the property or the asset is given to you to use. Sir, accounting will start on what date? Commencement date. Commenced. Accounting will start on what date, everyone? Commencement date. Yes, sir. तो बिफोर द कमेंसमेंट अगर आपने कुछ डिपॉजिट दिया है तो किधर ऐड करोगे? ROU. ROU. Yes, sir. And if I've given any incentive, before commencement, what will you do? मैंने आपको बेनिफिट दिया है. Less it. I know that you have to understand all these points, then only we can shift to the calculation. Until and unless I can't move forward with the calculation. ROU से माइनस करेंगे क्या? हाँ नहीं, डिपॉजिट से माइनस करके रिकॉर्ड करूंगा. वही ROU से माइनस. यस. तो देखो एक बार. ROU will include what? Lease liability plus other adjustment. What are those other adjustment? Can I say before commencement, if you have paid any payment, will you add or not? आपने ये लिखा ना? Deposit minus incentive. Yes, sir. Now chalo. This is done. Yes, sir. Yes, sir. Then everyone write down the next one. Initial direct cost. Third one. Initial direct cost. Initial direct cost. Initial direct cost. Initial direct cost. लिख लिया सब लोगों ने? Then write down the one. Dismantling cost. Present value of dismantling cost. Present value of dismantling cost. फोर्थ पॉइंट. Fourth one. Yes, fourth one. Present value of dismantling cost. Done everyone writing? So in ROU, what are the 4 payments? Lease liability, deposit minus incentive, plus what? Initial installation cost. When you purchase any machine, everyone, you have to install in your factory or not. Then only you will be able to manufacture. Installation cost. And dismantling, after 5 years, 10 years, you have to dismantle. Uska present value include karoge. Everyone, where did we cover this dismantling cost? IAS 16. IAS 16. Everyone remember? So is this IAS clear 16. what is included in lease liability and what is included in right of use ROU. asset? पक्का? Yes sir. सर अभी तो समझ में आ गए ROU में क्या आएगा लीज लाइबिलिटी. उसके बाद में क्या करेंगे? You have recorded debit ROU credit lease liability. उसके बाद में क्या करोगे? Depreciation and finance cost. Depreciation and finance cost. Okay everyone. And then once you record depreciation, what do you calculate? Carrying amount. And for lease liability, you calculate current liability and non-current. Non-current. Clear everyone? Yes, sir. Chalo, this is done everyone. So the type 2 question, we have understood this. So see everyone now. Aaja idhar. Sir, we have discussed what all is included here. Yes, sir. Then what is not included, everyone? Can you say we did what? Unguaranteed residual value or not? Yes or no? That is not included. I'll come to this point later on. Separate topic is that. Now everyone, okay, ROU, what all we have included? Initial value of lease liability, payment made before deposit, any incentive, initial direct cost, estimated cost to dismantle or this one. Yes, sir. Now everyone coming to discount rate, everyone. Sir, discount rate कौन सा use करेंगे? Will be given in question. ज्यादा सोचना पड़ेगा क्या? No. So discount rate, there are 2 discount rate. Everyone देखो पहला कौन सा है?
implicit rate. The second one is what? Incremental rate. सर implicit का मीनिंग क्या होता है? लेसर का आया रहा, उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस रिलेट्स अगेन टू AFM टॉपिक और FM. It will be given in the question usage. If first priority will be given to what? Implicit. If implicit rate is not given, then what will be given? Incremental. Incremental means what? If loan is taken from the market, what is the rate? What is the rate? Yes sir. इसमें कोई दिक्कत सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं. Implicit और incremental कौन सा भी दिया? First preference you will give to what? Implicit. Yes sir. This is done. Now everyone coming to the lease term. Now coming to lease term. देखो everyone. I say that I've given the property to you to use for 5 years. And I've given an option for you that you can extend for 3 years. What will be your lease term? मैंने प्रॉपर्टी दिया 5 साल यूज करो, आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन इंक्रीज दी लीज टर्म बाय 3 years. What is your lease term? 8 years. 8 years. When will you say 8 years? When you will extend After- or when you will not extend? When will Will extend? extend. If you extend, what is your lease term? 8 years. If you will years. not extend, then what is that? 5 years. 5 years. समझ में आया सबको? Then अरे लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड लीज टर्म. I say that I have given the lease to you for 5 years, but after 3 years you can cancel the lease. After how many years you can cancel the lease? 3 years. 3 years. If you cancel, what is your lease term? 3 years. Yeah. Only If 3 you years. will not cancel, what is your lease term? 5 5 years. इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे कॉम ये No. एग्जाम में पूछेगा भी नहीं. It will be directly given. Yes sir. Yes sir. So done this. Yes sir. Lease term also done. Now everyone, any doubts to anyone in lease liability? How do we amortize etc.? किसी को इसे टेबल में दिक्कत है क्या? ओपनिंग फाइनेंस कॉस्ट, लीज पेमेंट एक्सेट्रा? नो डाउट्स. हाउ विल यू प्रेजेंट नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी? एंड इन P&L what will you record? Finance cost. Everyone, you have written right to use as a lease liability. Below that mention finance cost to P&L, non current liability and current liability. Short form में लिखो सब लोग. Below that finance cost in P&L financing category, non current liability and current liability. Done? Any doubts to anyone in this? Nice sir. लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट सेम ही? Yes sir. Done? Okay, चलो तो. Now everyone, below ROU everyone, make this flowchart everyone. Make this flowchart below. छोटा flowchart बना लो. ROU. For ROU, what we will do everyone? Depreciation. If exercise purchase option is exercised or नहीं, ऐसा नहीं. Lessee will exercise purchase option. Depreciation will be based on what? Useful life. Lessee will not exercise purchase option. Then depreciation will be based on what? Lease term. Lower of lease term or useful life, whichever is lower. सब लोग ये बना लो छोटा सा.
लेसी विल परचेज, लेसी को लगता है कि मैं परचेज करूंगा, इफ दैट एक्सरसाइजेबल परचेज ऑप्शन इज इंक्लूडेड, depreciation will be based on useful life. If not, then lower of lease term and useful life. इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये तो बेसिक स्ट्रेट रूल है. If purchased, useful life. Not purchased, lower of what? Lease term and useful life. Now, sir, how should we treat this ROU? For ROU, everyone, IAS 16 or IAS 40. जिधर भी आपने लिखा ऊपर बना लो ऐसे, IAS 16 और IAS 40. Again, I'm saying in exam, complex question will come. Examiner will confuse you. पहले ही बता रहा हूं. Where IAS 16 will apply, IAS 40 apply, सब कुछ मिक्स होगा, मिक्स मसाला होगा. तो बराबर से क्वेश्चन पढ़ के करना है. Yes, sir. Now, I have a property, everyone. I have given this property to you on lease. And you have given this property to someone else on lease. आपने प्रॉपर्टी मेरे से लिया लीज पर, आपने किसी और को दिया. एंड आपके ये धंधा है, इट इज योर बिजनेस, देन व्हाट इट विल बी? 16. 16. I have given my property to you on lease and you have given to someone else. किसी और को टोपी पहना दिया तुम लोगों ने और आपका धंधा नहीं है वो. Then what? 40. Understood the difference? Yes, sir. Because this one we have an entire new topic, sublease. पहले नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ. Yes, sir. सबको क्लियर what all is included? So now let us do a question, everyone. अभी क्वेश्चन इधर करूं कि एक्सेल पर करूं? इधर ही सर. इधर ही. See presentation, everyone. Write down below ROU. You record this in non-current asset and depreciation you record in P&L. If IAS 40 investing category, IAS 16 operating category. Sometimes what will happen now in the exam? You think is a basic question of FR can be tested in SBR? Yes. We have seen multiple times. Done, everyone? 2 minutes, sir. 2 minutes. Okay. You can make the entire notes of leases in 2 pages. अच्छे से अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे की टर्म्स के साथ ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एट दी लास्ट. अगर कोई बना रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू शेयर इन दी ग्रुप इफ यू आर मेकिंग. सर लड़के ये लोग बोलेंगे कि सर हमारा काम नहीं है. यस मन्नू. सर ये ROU IAS 40 या 16 पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी या ऑपरेटिंग कैटेगरी में डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जाएंगे. IAS बट 40 IAS 16 हाँ IAS 40 है तो सर, इन्वेस्टिंग. सर बट लीजेस वाला जो अनवाइंडिंग है वो हमेशा फाइनेंसिंग में ही जाएगा. वो हमेशा फाइनेंसिंग में आएगा. क्या हुआ? क्या बोल रहा है? उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है क्या? चलो आ जाओ. डन. चलो एक क्वेश्चन करते हैं भैया. ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. एवरीवन सी क्वेश्चन शेयर कर दो ग्रुप में. So everyone please see this question. तो ये FR वाला क्वेश्चन है.
देख इसको याद है, एफआर कब किया रे तूने? No, sir. March 2025. 25, एक साल होगा, अभी भी इसको याद है कि एफआर का क्वेश्चन है। हाँ एफआर का ही क्वेश्चन है बेटे ये। अगर आप लोगों ने एफआर से मेरे से किया ना, आपको याद रहेगा अच्छे से ही। वही इसको क्वेश्चन भी याद है, सेम था। सबको लगता है कि एसबीआर में डिटेल नहीं करना अच्छा रे, डिटेल में करके जाओ तो एग्जाम क्लियर होगा। अगर जैसे 60 या 70 आवर्स तो इम्पॉसिबल है। देर को नहीं समझ में आता कैसे 60 या 70 आवर्स में पॉसिबल। हाँ, इफ यू नो एवरीथिंग ऑफ एफआर, इफ यू नो एवरीथिंग ऑफ एफआर प्रॉपरली, पूरा आता है एफआर का, तो इट इज पॉसिबल। जो छोटे छोटे एग्जाम पॉइंट का भी डिस्कस नहीं करना है ना, तो हो जाता है 70 आवर्स में पढ़ाना एफआर, एसबीआर सॉरी। पढ़ लिया सब लोगों ने? तो कैलकुलेट करो, किसका वेट कर रहे हो? कैलकुलेट करो, आंसर करो, लिखो। तो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन क्या वर्किंग नोट बनाओगे कि नहीं? वर्किंग नोट है। सो व्हाट इज फॉर हाउ मेनी इयर्स इज दिस एवरीवन? मेरे को भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। D enters into 2 years lease of a lorry. D contains a option to extend the lease for a further year. D believes that it is reasonably, so they will extend. Exercise. L has a useful life of 10 years. Yes, sir. Only for 1 year they are extending. Are they purchasing this? अरे वो परचेज नहीं कर रहे बाबा। देन लीज टर्म 10,000 per year and 15,000 per year for the option period. All payments are due at the year end. It is arrear का case. To obtain the lease, D incurs initial direct cost of 3,000. Initial direct cost, where will you add? ROU. ROU. The lessee immediately reimburses how much? Reimbursement कितना मिलता है? Initial direct cost करते ही कितना वापस मिल रहा है उसी दिन? 1000 माइनस कर देंगे। 2000. Sir. The interest rate within the lease is not readily determinable. तो कहने से implicit नहीं दिया तो क्या दिया इधर? Increment. Increment. बोरिंग। Yes, incremental. So year 1, 2, 3. Cash flow is how much everyone? 10,000, 10,000 and 15,000. Discount factor at 5%. कितना है ये? So what do you record? Debit, credit. Lease liability is how much? 31,550. ROU 31,550 plus 2,000. Cash is going out 2,000. तो कितना वो ये 3,3,550. Anyone, any doubts in this? In exam, what will happen now? The examiner will directly give you the ROU and lease liability value. Okay, they'll give you the present value. Most of the 99.99% वो present value दे देंगे आपको. But उसके बाद में आपको क्या लिखना है? आपको explain करना. How will you do the accounting? So what are the 6 points everyone जो आपके दिमाग में fit होना चाहिए? ROU lease liability is recognized initially. Lease liability is unwinded. ROU is depreciated. Depreciation in P&L. Finance cost in P&L and the carrying amount. 6 पॉइंट लिख दिया, पूरा मार्क्स मिल जाएगा सर. Explain with calculation question. Everyone start with the explanation, write down in your own point. Chalo everyone, if you're done with the calculation. Hook line, as per IFRS 16. अभिषेक सर डर गया कि सर क्या बोल रहे. As per IFRS 16, at the commencement date,
the lessee should recognize ROU of 3,550 and lease liability of 31,550. मैं भी आ जाता हूं इधर, मैं भी लिखता हूं. As per IFRS 16, lessee will recognize right of use asset, that is 33,550, and lease liability, that is 31,550 at the commencement date. Yes, sir. Lease liability. It is explained, everyone. When it is explained, you have to explain each and everything. Lease liability is the present value of the future cash flow discounted using the incremental borrowing rate. That is using the incremental borrowing rate, that is 5%, as implicit rate is not given. As implicit rate is not given. As implicit rate is not given. Yes, sir. Then what is the next sentence you'll be writing, everyone? ROU, right of use asset, is measured as present value of lease payment plus net initial direct cost. आपके specimen mocks, where you have mocks on your ACC platform, everyone, specimen 1 and specimen 3. तो उसमें question है accounting का and definition. So in one you have definition question, in one 8-mark questions regarding the entire explanation, explain with calculation. So ऐसे ही लिखना आपको आंसर उधर. लिखता था initial direct, that is 33,550. Yes, sir. Then the finance cost, I'll write down the finance cost on unwinding the lease liability is recognized in P&L under which category? Financing category. So that is what, everyone, that is my brackets में क्या लिखूं? 31,550 into 5%. 1,577. The right of use asset will be depreciated over its lease term as the ownership is not transferred. Is not transferred. Yes, sir. The depreciation is recognized in P&L. In FR, everyone, आपको depreciation खाली calculate करना था, इधर calculate करके explain भी करना है. Is recognized in P&L under operating category. That is 33,550 divided by 3 years. 11,003.
the carrying amount of ROU in SOFP as at 31st 12, डेट दिया है क्या क्वेश्चन में कुछ? हाँ, 31st 12 2000 x1 is 33550 minus 1183 223667. The carrying amount of lease liability as at 31st 12 2000 x1 in SOFP is 31550 plus 15 interest with how much? 77 minus 10,000. Everyone, you need not prepare a table, etc. Directly do in bracket to save your time in the exam. Yes, sir. Done with this, everyone. See, I'm done with this. So we have understood the definition, we have understood recognition, we have understood two dates of lease, inception, commencement. We have understood the initial measurement and subsequent measurement of lease liability and ROU. तो presentation भी हो गया, measurement भी हो गया, सब कुछ हो गया. I hope everyone now you have a good grip on how to frame the answers. थोड़ा बहुत फ्लो बैठा कि नहीं? थोड़ा बहुत डिटेल में लिखो आंसर्स, क्यों टाइम रहेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा वो, स्लोली. यस सर. सब लोगों का हुआ बता मुझे, समझ में आया? ये एफआर का पार्ट है बाबा, अभी तक एसबीआर का कुछ चालू हुआ ही नहीं है. एसबीआर का पार्ट कल आएगा पूरा नया. Sir, यस, aren't we supposed to include that the useful life of we're taking it as 3 years because there is a reasonable chance that I have mentioned one simple point that the ownership is not transferred, so lease term is only lower, na? Useful life Okay. is 10 years, lease term is lower. I have directly mentioned, so examiner will understand. Okay. The time, if your typing is very fast, you can mention that also in detail. But होगा नहीं टाइम इतना. Yes, sir. हुआ सब लोगों का लीज समझ में आया? मेजर पार्ट ऑफ लीज इज डन एवरीवन. अभी क्या है, सब रिपीटेटिव हियर एंड देयर, small points which you have to keep on understanding, which can come in the exam. Yes, sir. So aa jao everyone. If you see here the notes, everyone, in notes the presentation we have done, the asset is how it is measured, we have discussed that, and how either IAS 16, IAS 40 fair value revaluation, everything will apply as per that. ROU done, arrears case we have done, lease liability how do we do subsequent. Now everyone please see the journal entry. everyone journal entry देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेंशन करना पड़ता है अगर क्वेश्चन आ गया तो, कि प्लीज मेंशन द journal entry also before the commencement. Everyone, if you are doing any payment, what will you mention? Debit, prepaid lease payment, credit, bank. Now at commencement date, what will you record? ROU and lease liability. If you have received any incentive, what will you do? Bank. If you have then if any provision is there, you will credit, and if any this is that this prepaid lease payment or initial direct cost, you will mention that. सबको समझ में आया? सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है ये वाली इंट? एवरीवन राइट डाउन ROU, lease liability and credit, provision, credit, initial cost. Yes sir, initial cost. Write down this one, journal entry. जब आपने नोट्स बनाए तो जर्नल एंट्री लिख लो. यस मनु. सर वो जो सेकंड वाला डेबिट बैंक किया है हमने, तो सर वहाँ पे ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे ना, इंसेंटिव रिसीव ऑन कमेंसमेंट. बिफोर वाला तो हम लोग ऊपर अकाउंट कर ही लेंगे. नहीं ये इसको हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीपेड में इंक्लूड कर दिया ना.
ये ऑन कमेंसमेंट वाला इंसेंटिव है ना सर? हाँ ऑन कमेंसमेंट, बिफोर नहीं, आफ्टर आना चाहिए, ऑन कमेंसमेंट आना चाहिए। एक मिनट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, चेंजेस है ऑन कमेंसमेंट। तो एवरीवन आई होप, अरे जर्नल एंट्री में तुमको दिक्कत नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से फ्रेम करना, ठीक है भैया, because there are multiple points, it's very difficult to include all that in a journal entry because everything will not be tested in the exam, but you have to remember this one, ROU, lease, liability and provision wala. Yes sir. Journal entry also clear sir. And then everyone, I hope this is also clear to everyone. Finance cost entry, debit finance cost, credit lease liability, and when you pay lease liability and cash. Yes sir. So with this everyone, the arrears case is done. Arrear का केस होगा, अभी कौन सा केस बाकी है? Advance. Now we'll take a break, come back and do advance and recognition exemption, which is a small topic. And then we will move to the favorite topic of the exam, that is sale and leaseback. Everyone, time is 10:57. Everyone be back by 11:30. Break, take a break everyone. Much needed break. Back everyone. Back. Yes. Yes everyone. Yes sir. So till now we have done what all? Sir, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? सर अभी तक डेफिनेशन किया है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, इनिशियल, सब्सीक्वेंट, प्रेजेंटेशन, एंड वी हैव डन व्हाट? अरियर्स केस. तो नाउ वी विल बी डूइंग व्हिच वन? अभी कौन सा करेंगे अपन? एडवांस वाला केस करेंगे. ओके एवरीवन? यस सर. सेम, ओनली वन स्मॉल डिफरेंस एवरीवन. सो एवरीवन राइट डाउन एडवांस. Write down the heading as advance everyone. Write down the heading as advance. Write down the heading as advance everyone. Yes sir. So same example, ये A है, ये B है. A has given the property to whom? B. A is lesser, B is lessee. So it is what everyone? A lease contract. It's a lease contract. Yes sir. So now everyone, I say it's the case of advance. Advance means the payment is done on the day one. That is X1, X2, X3, X4, X5. So can I say on what date payment is done? 1st January X1, 1st January X2, 1st January X3, 1st January X4, 1st January X5. Yes sir. So every start of the year, a payment of 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 is done. Anji sir. So everyone, now which will you discount the first payment? No sir, हम discount नहीं करेंगे. So write down the year. Today is 0. Then end of year 1, 2, 3, 4, 5. So cash flow कितना आज के आज? 10,000 sir. 10,000 sir. 10,000 sir. 10,000. 10,000. And discount factor, I say discount rate 10% है. So on the day one, the discount factor will be 1. I hope everyone knows. You will not discount. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. So everyone please calculate the DCF and same. सब लोगों को लिखना है बाबा. लिखना है, लिखो. Depends upon you. But I say it's better that you write down everyone.
41,690 I'm getting in one. So what's the ROU, everyone? Debit, credit. ROU to lease liability 41,690, 41,690. Yes, sir. This 41,690, everyone, is it before the payment or after the payment? ये before the payment है. पहले payment के पहले, first payment के पहले कितना आपका ROU and lease liability? ROU and lease liability when you not consider the first payment is 41,690. Now on the day one, आज क्या आज अपने आप you have calculated the ROU and lease liability. You have calculated now 41,690. Now after 10 minutes or 15 minutes you are doing the payment. अगर आप पेमेंट करोगे कितने से वैल्यू कम होगा? Lease liability will reduce and what will go out? Cash. How much? 10,000. 10,000. Yes, sir. Sir, before doing the first payment, sir, अभी तक कुछ पेमेंट ही नहीं किया तो वैल्यू कितनी है लायबिलिटी की? 41,690. Now everyone, once you do the first payment, how much is your liability? It will reduce by 10,000. Yes, sir. So everyone see now, opening balance was how much? 41,690. Payment, revised opening balance, interest, and then you have closing balance. 10,000 payment is done. So 31,690. Interest at 10%. Interest at what, everyone? 10%. 34,859. 34,859. And minus again 10,000. Yes, sir. You get 24,859. 24,8 2,486. अरे कुछ नहीं, सब सेम है एवरीवन. इट्स एंटायर सेम ओनली, नथिंग न्यू इन दिस. Do not say कि sir it's new. Yes, sir. Everything is same everyone. Only difference क्या है? Sir, the difference क्या है? जो फर्स्ट पेमेंट है उसको डिस्काउंट नहीं करोगे. You will not discount the first payment everyone. Everything is same. अभी तक एग्जाम में आया नहीं एडवांस का केस, बट इट कैन कम. So do not be surprised because the examiner assumes that this you know because it's an FRS. So everyone in P&L, what will you record? So depreciation will be 41,690 divided by 5 years. 8,338. So every year in P&L 1, 2, 3, 4, 5. 8,388, 8,388, 338, 338, 338. Yes, sir. Then this is what depreciation. Finance cost will be how much? 3,169, 2,486, 1,734, 921, and here 0 nothing. Then coming to balance sheet. Under balance sheet, we have non-current asset. Under balance sheet, we have non-current asset.
कल बैंगलोर में इवेंट था एसीसी एफिलिएट्स एंड मेंबर्स के लिए, शंग्रीला होटल में। तुम लोगों को तो आता है कि नहीं ऐसे मेल? मुंबई, पुणे में नहीं होता, मुंबई में होता है, हैदराबाद में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। मेल चेक करना, पैसा देते हैं ना तुम लोग सब्सक्रिप्शन फी, जाके आना नेटवर्किंग इवेंट में। मैं कितनी बार गया हूँ। यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल और मेंबर्स एक्सेट्रा, आपको मालूम पड़ता कौन किधर काम कर रहा है एक्सेट्रा, इफ यू नीड एनी हेल्प एक्सेट्रा। मैंने बोला था ना मेरा ओबीयू का इशू हुआ था, तो मैं बहुत जनों को पूछा था सर। यस सर, डिपेंड्स एवरीवन, सुकान डिपेंड होता है। अभी जस्ट हुआ था 6 महीने के पहले, दिल्ली में था, दिल्ली में भी था, मुंबई में भी था, बेंगलोर में भी था। डिपेंड है, एवरी ईयर नहीं होता है, हर 4 या 3 साल में एक बार होता है। अब जो सब्सक्रिप्शन फीस का तो मेल आता है ना, ऐसे कभी भी इवेंट जाना, स्टूडेंट्स के लिए तो भी कम हो गया है, बट रहता है ऐसे नहीं कि नहीं, बट अफिलिएट्स के लिए तुम अफिलिएट बन जाओ जब होगा बात, जाना उधर, खाना खा के आना, टाइम पास करके आना। तुम लोगों को मैं बताऊं ग्रुप में क्या चल रहा है, कल वो तो खाना था ना, मेरे सब सब कमेंट पास करे, खाना ये नहीं था, वेस्ट ऑफ मनी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। हर इट वाज ओनली वेज, खाली वेज खाना था। दैट्स बैड। 326, हाँ एवरीवन, व्हेन यू बिकम एन मेंबर यू पे 326 पाउंड्स एज मेंबरशिप फीस। तो अप्रॉक्स अगर लगाओगे 35,000 है। बोल रहे कि वेस्ट आउट, वेस्ट एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। चलो आ जाओ बैक, नॉन करंट एसेट एवरीवन, व्हाट विल यू रिकॉर्ड? आरओयू, आरओयू क्या रिकॉर्ड करोगे तुम लोग? 41,690 माइनस व्हाट? 8,338 इज वन। चलो 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 चलो, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करो एंड बताओ। 3352 सर, देन zero. Then you have non-current liability, then you have something known as current liability. First difference was what everyone, you will not discount the first payment. अभी दूसरा difference इधर है, current and non-current split. That's the second difference everyone in the case of advance. Yes sir. So see everyone now. आ जाओ. Sir, what was our liability sir? Your liability was how much everyone? Today 31st December 2000 X1. Last date of the year 34,859. Tomorrow morning how much you'll be paying? कल सुबह कितना पे करना है? 10,000. So everyone, what will be your current liability? अरे तुम लोग पैसा कितना पे कर रहे हो? 10,000 sir. So your liability from this 34,859, do not say कि sir this is non-current and the difference is current. No 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 no, अलग है पूरा. Sir, tomorrow morning how much will be paying? 10,000 rupees. Yes sir, 10,000. And this remaining will be what? Your non-current. Will be your non-current. So current liability is 10,000 and non-current is 24,859. Then 24, 27,000, 10,000 and 17,345. Yes, sir. Then next one, 19,000. Again 10,000, 9,079. Yes. Then ultimately it is what everyone? Again 10,000. So non-current liability is nothing here. Tuck, 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 nothing. Because in the fifth year कोई liability है ही नहीं ना. Fifth year on the day 1, 1st January, new year, you are making the payment. So no liability. Yes, sir. So this is the case of advance, everyone. I hope you have understood advance, arrears, initial measurement, subsequent measurement, how to split it.
Everyone understood? Initial measurement, subsequent. So if you come everyone, अभी तक कौन सा टॉपिक अपन का हो गया? Sir, definition done. Initial and subsequent measurement we have done. Now recognition exemption, sale and leaseback अपन करेंगे. Recognition exemption again I'm saying एक past paper है in your specimen mock, not your specimen exam. Yes sir. तो चलो करते हैं. Yes sir. Everyone please write down the next topic everyone. Recognition exemption. चलो 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 लिख लो recognition exemption. Write down the next topic, recognition exemption. Only one past paper is there relating to this topic. Not frequently tested, but अगर नसीब खराब है क्वेश्चन आ गया तो depends again. Done everyone writing? सब लोग साइलेंट हो गए. Done, sir. Done, okay. So now everyone, what does recognition exemption means? बहुत simple topic. It's a very simple topic. Everyone देखो. Now everyone, what did we do till now? The normal accounting which you have learned in your class 11th and 12th, what did you do? Every year, what you used to record? Let's say everyone 12,000, 14,000, 16,000, 18,000. Is this fixed or variable payment? ये fixed payment है sir. Yes sir. Now, what did you do in lease? इसको क्या करते थे तुम लोग? Discounting. And what did you record? And lease that. Lease. ROU you depreciate this, unwinding. Yes sir. Now the standard is saying key that you need not do this entire accounting. Whatever you have done in your class 11th and 12th, you can do that. That means you can record expense straightforward. When sir? When two condition, when any one condition is satisfied. दो condition, दोनों में से एक satisfy हो गए तो आप कर सकते हो. Yes sir. What are these two conditions everyone? That is lease is of 12 months everyone. अगर लीज 12 months का है तो कैन आई से विल डिस्काउंटिंग अप्लाई हियर? नो. और इट इज अ लो वैल्यू असेट. इट इज व्हाट एवरीवन? लो वैल्यू असेट. यस सर. दैट मींस जो असेट आपने लीज पर लिया उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है. जैसे लेट्स से आई हैव टेकन कैलकुलेटर ऑन लीज. कैन आई से व्हाट विल आई बी पेइंग 10 रुपीज? यस और नो ऑन रेंट. तो कैन आई से इट्स वेरी लो. सो द स्टैंडर्ड इज सेइंग इसका आप do not do discounting and waste your time. It's very small amount. So directly record this as an expense. How? You should record the expense on SLM basis. What is your total expense for the 5 years everyone? Anyone? The total कितना है? 10, 12, 14, 16, 18. 70? 70. So divided by 5. What is the per year expense? 14,000. So every year, what is the expense you have to recognize? 14,000 everyone. So recognition exemption क्या बोलता है? That you need not follow what? अरे you need not do this time pass, ROU and lease liability. What you can do? What is the total payment you will be paying for the 5 years? Take it and divide it by what? 5 or the number of years. So per year मेरा खर्चा कितना हुआ P&L में? 14,000. Anyone any doubts in recognition exemption बता? Yes, sir. Like lease of 12 months, so operating lease only we can put here. Now, operating lease, do not confuse between lesser and lessees Okay. accounting. Yeah, the old standard which you refer, जो पहले standard था IAS 17 leases का, उसमें operating finance उन्होंने वापस divide किया था लेसी के लिए. But here that has been removed. पहले था वो. First you had to decide operating finance lease for lesser also, lessee also. But अभी लेसी के लिए नहीं है. Clear है बेटे? Mhm. Everyone clear with the recognition exemption? When can you follow? When the lease is of less than 12 months. अरे less than 12 months से तो discounting आएगा क्या? Discounting will not come. And lease of low value asset. Sir, what does low value asset means? Low value asset depends on judgment. For Reliance company, 10 rupees is small. For Reliance company, 1 lakh is small. But for me, 1 lakh is what? A big amount. So depends on judgment. Yes. So everyone, आ जाओ. Recognition exemption. See now. Everyone, please write down the heading. Everyone, flowchart बना लो. Write down recognition exemption. पूरा नहीं लिखना, जो कंटेंट बोलूंगा वही लिखना है.
Recognition exemption mention, this is optional. ये option है अपन के पास. If you want to do debit ROU lease liability करो बाबा, टाइम पास करना करो, कोई दिक्कत नहीं है. If you want to save your time, what you can do? No need to record ROU and lease liability. So there are two things. Any one condition satisfies. Short-term lease, lease of low value item. Lease of low value item. Yes, sir. Write down everyone. Short-term lease means what? If lease term is 12 months or less. If lease term is what, everyone? 12 months or less. Yes, sir. Then lease of low value item. Lease of low value item means what? IFRS 16 does not define low value item. So what are the examples? Tablet, laptop, telephone, small personal computers, small items of furniture. All these are the examples of what? Low value item. एक ही question है. Again, I'm saying everyone, there is only one question in the past paper. There is also your specimen exam. जब आप mock दोगे ना, आएगा ये 6 marks के लिए उधर. Yes sir. Yes मन्नू. सर अगर लो वैल्यू आइटम हम 10 ले आए तो सर वो मटेरियल नहीं हो जाएगा? डिपेंड करता है ना. अगेन लो वैल्यू आइटम डिफाइन किया है क्या? सर अगर टैबलेट लो वैल्यू है और हमने 10 टैबलेट्स लीज पे लिया तो सर इंडिविजुअली लो वैल्यू देखेंगे कि कंबाइंड लो वैल्यू देखेंगे? इंडिविजुअली. ओके. इंडिविजुअली. अभी देखो ये ऑप्शन है. एवरीवन अंडरस्टैंड. इट्स एन ऑप्शन. इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू हैव टू फॉलो. ओके. तो अगर आपको लगता है कि आई कंबाइन एंड रिकॉर्ड ROU लीज लायबिलिटी, दैट विल प्रोवाइड बेटर, डू इट, नो इश्यूज. यस. Yes, sir. So short-term lease means what, everyone? Lease which is of less than 12 months and does not include any option to extend. Now, everyone, will car be a second-hand item? Will car be a low-value item? No. Will second-hand car be a low-value item? No, Baba, no. Yes, sir, simple. So how will you record the expense, everyone? Please write down this. How will you record the expense? Expense कैसे record करोगे तुम लोग? Expense on either SLM basis over lease term, or another systematic basis that is more representative of the lease benefit. As you get the benefit, record the expense. Now that is normally over the lease term only in the exam. Expense is recorded on SLM basis like your depreciation. Add the total 5 साल के लिए खर्चा कितना होगा उसको डिवाइड करो. किसके लिए? For 5 years. This is recognition exemption. Only one past paper is there. I'll take the same type of question. The other question we will be doing on Excel. सब लोगों ने लिख लिया? क्वेश्चन करें अभी डायरेक्ट कि बेसिक एग्जांपल लिखना है? Everyone, what do you say? Basic example or directly a question? सर बेसिक एग्जांपल. बेसिक एग्जांपल क्यों? मेरे को मालूम है इसमें 1-2 पॉइंट नए आएंगे, तुम लोगों को बाद में डाउट आएगा. तो राइट डाउन एवरीवन बेसिक एग्जांपल, because there is a point where you will have a doubt. So it's better that we take an example. See everyone, I've taken tablet for 3 years on lease. First year, how much I'm paying? First year I'm paying 10,000. Year I'm paying 12,000. Year I'm paying 13,000. So what is my total payment? 25,000 per year. Not 25. So 35. Yes, sir. 35,000. अरे यार बहुत खतरनाक नंबर आया रे. Yes, sir. Yes, sir. So what is the expense for the first year? You will record everyone. पहले साल के लिए expense कितना record होगा? Debit expense of how much? 11,666. Yes, sir. Then what is the amount you paid? पैसा कितना दिया तुम लोगों ने? 10,000. So remaining will be what, everyone? Liability. Yes, sir.
The remaining will be your liability. Second year. So second year, what will happen? Again, sir, we record expense. Sir, expense कितना है? 12. No, sorry. 1666. Cash is going out of 12,000. Yes, sir. And what? Debit liability. Remove the liability. अरे liability को हटाना पड़ेगा तुम लोगों को. तो कितना होगा ये? Difference 334. 334. Yes. Then again third year. Debit, credit. Expense 11666. Cash, how much you giving? 13,000. The difference 1334. 1334. This is what your liability is reducing. Yes or no? अरे सर खर्चा तो रिकॉर्ड कर दिया. सर we recorded expense of 11,666. But we are only paying how much? 10,000. So remaining should be paid. Yes, sir. So in this question, everyone, what can come? Liability can come, prepayment can come. समझ में आया सबको? So everyone write down note also. Note. Outstanding liability or last one should be debit, yeah, the liability. sorry, yes. Debit. Or prepaid can come in the exam. So prepaid means what? Let's say you have done the payment of 12,000, but you have recorded expense of how much? 10,000. So the 2,000 you're paying extra. So what will be the entry for this one? Expense 10,000, payment of 12,000, and this is what? Debit, prepaid 2,000. Prepaid is what, everyone? Asset for you, okay? एक asset होता है जैसा. So in exam, the examiner wants you to mention this, whether asset is there or liability is there at the year end. ये आपको mention करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है? 1 marks will be for this only, if a question comes from this. सर इस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज नहीं करेंगे? Yes. सर जो इनिशियली जो लाइबिलिटी हमारा बन रहा है और फिर उसमें से यूज भी हो रहा है, तो सर वो बैलेंस पे हम इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज कर रहे नहीं कर रहे, इधर डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे बेटे. डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे. ये नॉर्मल अकाउंटिंग करोगे जो अपने क्लास 11th और 12th में की है. क्लास 11th और 12th में डिस्काउंटिंग का था क्या कुछ अकाउंट्स में? नहीं. Yes, sir. So now see everyone, let us do a question. ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी है पास्ट पेपर. So please see the question which I've shared. Hello everyone. Same question is there in your past paper also in your specimen exam. 6 marks requirement. On 1st August 2000X1. Okay, on what date? 1st August. Hedge company entered into a contract with Top Tech to obtain what? The use of laptop computer for all of its 75 employees for a period of 3 years. Hedge has agreed to pay a total of how much? 350 for the use of each tablet. Initial deposit कितना मिला? 50, sir. Is payable at the start of the contract and the balance is payable in 3 equal installments at the end of the lease term. Are they saying at the end of the year end or at the end of the lease term? Lease term. So everyone देखो, my year end is what, everyone? Year end is 31st 12 x1. When I am giving this,
1 अगस्त, तो मेरा लीज टर्म कब खत्म होगा? 31 July 2002. So in this year, we have to record expense. Yes, sir. How many months expense will record? August, September, October, November, December. 5 months. 5 months. And what is the payment? We have to check that. Yes, sir. Hedge is keen to reduce the level of debt in the statement of financial position in order that it does not breach bank covenants. No issues. कुछ लेना देना नहीं है. Discuss how hedge should apply IFRS 16 when accounting for the tablets in the year ended 31st December 2001. So how can I say we can follow what everyone? A low Exemption. value asset. It's a low value asset. So what we can do? So we can record expense over the period. Expense only, not recognizing तो कितना होगा? ROE in LL. So total expense कितना हुआ आप लोगों का? What's your total expense, everyone? In the working note. Working note में नीचे बना तो चलो आ जाओ बेटा. Working note total expense is how much, everyone? How many this was that 350 in 350 into 75. So per year how much is this? 8,750, but we need only for 5 months. कितना 5 months के लिए है? 3645. But what is the payment received? Payment कितना मिला day 1 पर? 75 into 50. पैसा इतना मिला, कितना हुआ ये? What is this, everyone? You have received extra money or not? पैसा extra मिला कि नहीं? अगर पैसा extra मिला तो क्या होगा ये? Liability होगा कि asset? What will this be? Liability. Liability कि asset? Asset for us. Asset पक्का? You are the lessee. आपने पैसा ज्यादा दिया है ना? अरे पैसा ज्यादा दिया तो आपके लिए क्या होगा? Liability. Assets. Asset है ना? Asset. You have Assets given more prepaid है. payment today, but till now you have Yes. not taken the benefit asset. Everyone understood this calculation? Now you have to do what? You have to frame the points. Yes, sir. Chalo then everyone. Let us frame the answer. Yes, sir. So as per IFRS 16, lease of tablets qualifies as a low value asset. Therefore, IFRS 16 recognition exemption can be applied. Yes, sir. मैंने technical point लिख दिया sir. Now the accounting of recognition exemption. Recognition exemption क्या बोलता है? Recognition exemption requires that lease payment are recognized as an expense over the period. कौन सा period? Over the lease period on SLM basis. Yes, sir. Then can I say? Even though if everyone you have not done this one, अगर आपने working note नहीं बनाया, if you have written totally in the bracket, you will get marks. See now the total lease payment is 350 into 75, 26,250. Therefore, the monthly expense per month expense कितना होगा? The monthly expense is 26,250 divided by 36 months. 3 साल है तो 36, 729. Therefore, the expense to be recognized in P&L. Under what category? Under operating category. For the current year is
729 into 5 months. The initial payment, जब इनिशियली पैसा मिलता है तो क्या रिकॉर्ड करोगे आप? asset. Asset, and slowly what you will reduce that asset. The initial payment received is 50 into 75. 3,750. Am I right? Yeah. On 1st August X1. The initial payment received is this one on 1st August 2000 X1 and is recorded as what, everyone? As prepayment. और धीरे धीरे क्या करेंगे इसको P में लेके as prepayment and release to P&L as an expense. At 31st 12, what was the asset? The remaining prepayment balance is recognized as an asset in SOFP. That is 3,750 minus 3,645, 105. Yes, sir. 105. So till now, everyone, we have done 3 types of question that usually comes in the exam. 3 तरह के question. I mentioned 8 type of question. 3 types of questions are done. Definition done, then accounting part done, then recognition exemption done. That is hardly one past paper in your specimen exam. Because this topic is frequently tested in FR, so examiner will not give this topic. अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है, दिन अच्छा है, it's a very good day, a question can come. Yes, sir. So what is the entry we record, everyone? Debit, credit, expense. This is the combined entry, everyone, prepaid. So with this, everyone, this part is done. Yes, sir. So any doubts to anyone in recognition exemption? Clear सबको? Yes, sir. So now this part is also done, sir. पक्का हो गया. Now, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंफर्म. अफीफ समझ में आया? अर्जुन, अश्विनी, इनाम, फरहान, हरी, हेतवी, ईशान, जतिन, जेसना, काव्या, केशव, खुशी, कुशाल, Yes, sir. अनित, नेविन, पूर्णिमा, राहुल, महिदा, Yes, sir. सत्यांग, सुकांत, टेरी, विद्या, विनय, सुशल. सर यस बेटे. सर वो प्रीपेड जो 105 आपने डेबिट किया सर, उससे तो 210 हो जाएगा ना, वो तो हमारा बैलेंस तो खुद ही से रह जाएगा. हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. मैंने एकदम से डायरेक्ट. अरे आप क्या करोगे डे 1 पर? डेबिट, क्रेडिट, कैश 3,750 प्रीपेड. हाँ, yes, sir. 3,750. Slowly you will reduce. Okay. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया. Now everyone, let us start with the sale and leaseback. Everyone write down the most interesting topic and the favorite topic of the examiner. इसमें 3 केस है सब लोग. कितने केसेस है इसमें? 3 cases. And if you see your this one, what we say, your Kaplan kit, or you refer BVP, case 1, case 2 is frequently tested and it is there in the Kaplan also. But case 3 कोई क्वेश्चन है नहीं, बट एग्जाम में आ चुका है. तो अपन तीनों केसेस बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और हाउ टू फ्रेम द आंसर आल्सो विल बी डूइंग. यस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सेल एंड लीजबैक. यस सर. सर अभी क्या होगा इधर देखो. There are 2 persons. This is Nevin and this is who? Afif. Nevin कौन होगा? लेसर होगा. अफीफ कौन होगा? Lessee. Now what Afif is doing, everyone?
अफीफ के पास एक मशीन पड़ा है, या आप बोलो आईफोन है. नाउ अफीफ इज सेइंग व्हाट, आई विल सेल दिस टू whom, टू नेविन. So when Afif is saying कि this phone I have machine, I am selling this to Nevin. Why? उसको क्या चाहिए? अगर वो बेचेगा तो उसको क्या चाहिए? सर पैसा चाहिए सर. सर घूमना है, ट्रिप पर जाना है सर, अभी सब दोस्त गोवा जा रहे तो मेरे को भी जाना है, ट्रिप पर जाना है, जो आईफोन है उसको बेच दिया. बट मैंने क्या किया, अफीफ ने क्या किया, पैसा चाहिए, पैसा तो मिल गया. देन व्हाट डिड अफीफ डू ना, अफीफ ने बोला कि गोवा जाऊंगा तो आई नीड फोन ऑल्सो टू मेक वीडियोज एक्सेट्रा, टू क्लिक पिक्चर्स. सो अफीफ ने क्या किया ना, अफीफ ने क्या किया, नेविन से वापस क्या लिया, लीज पर ले लिया सेट. लीज पर ले लिया किसको, आईफोन को. तो अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, व्हाई विल अ पर्सन सेल द एसेट एंड अगेन टेक इट बैक ऑन लीज. अफीफ को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था. एंड ही वांटेड टू यूज द एसेट आल्सो. व्हाई? बिकॉज इज गोइंग टू गोवा. So everyone here, what is happening here? Afif is selling the asset. When he is selling the asset, everyone, we have IFRS 15 का condition which should be met in the scenario. That means control is transfer. आपने एसेट को बेच दिया, अफीफ ने क्या किया, बेच दिया, बट वापस क्या लिया है, लीज पर. सो अफीफ इज सेलिंग दिस एंड देन अगेन इज डूइंग व्हाट, लीजिंग इट बैक. यस सर. सो हियर व्हेन दे सेल एवरीवन, ये कौन हुआ, लेसी. So here can I say he was who? Supplier. ये कौन था, customer. But if you see when we purchase and this one, can I say seller and buyer. जब फोन बेचा तो now what will Afif do everyone? Afif क्या करेगा? Afif is saying that I am selling the asset and Nevin is saying that I am purchasing the asset. When we say IFRS 15 condition should be satisfied, that means it is a say simple. Now Afif will do what everyone? Afif को क्या क्या मिलेगा आप लोग बताओ. पहले क्या जा रहा है, अफीफ को क्या मिला, पहला डेबिट व्हाट, कैश. कैश. दैट इज कमिंग इन, यस और नो एवरीवन. एंड व्हाट इज Yes. गोइंग आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, asset. which Assets. asset is going out, iPhone. Then Afif will record again what, ROU. and lease Lease liability. Liability. Can I say for sure, sorry my bad, मैंने उल्टा लिख दिया. For sure everyone, can I say there will be a difference or not in the journal entry? तो Yes. if the difference is on the debit side, इसको क्या बोलेंगे, Gain. the last बाबू, इसको क्या बोलेंगे, Gain. Everyone understood? A sale and leaseback Yes. difficult है कि easy है बाबा. इजी. पहले लीजी था, वो लेजर बन गया. पहले जो लेजर था वो लीजी बन गया. हाँ. तो everyone, what is Afif doing? Afif बोल रहा है कि टाटा आईफोन, and what is coming in again? ROU is coming in the form of ROU. what? iPhone is coming in the form of what? ROU. ROU. Yes sir. सबको क्लियर है? Yes, पक्का एकदम क्लियर. पक्का बढ़िया. चलो आ जाओ ना, सब लोग हेडिंग बना लिया. So see everyone, please make this flow chart everyone. Everyone please make this flow chart और ये लिखो तुम लोग. Flow chart, please make the flow chart everyone. That control is transferred. अगर control transfer हुआ तो क्या होगा? IFRS 16 will apply. Sir, if control is not transferred, then whatever amount Afif have received, he will record this as a loan. Asset बेचा ही नहीं है, but पैसा मिल गया है. Control transfer नहीं हो. This control is not transferred as per IFRS 15. It will be mentioned in the question, so do not worry about that. Sir, control transfer नहीं हुआ है. Control is not transferred. Record this as a loan. Make simple notes everyone. पूरा मत लिखो. Control not transferred. Asset is not derecognized. Amount is recorded as loan. Control transferred. Sale and lease back accounting is done. Derecognize asset. Record ROU. Record lease liability. Simple. बस. जितना simple हो उतना simple बनाओ notes. So that will be easy for you to revise. And again I am saying everyone, revision videos are uploaded. जब leases हो जाएगा so you can refer to the revision marathon of the previous batch. उधर 1 घंटे में किया लीज, इधर अभी 12 hours or 10 hours of leases. There I've discussed everything in this one.
All the three cases we'll be doing, we will do basic question, then we will do the exam kit question, exam cell question. Exam kit आपको करना है. What three questions are all same, copy paste same, which we'll be doing now. The basic question which I'll be taking will cover 70% of your exam kit here only. So hardly we'll be doing 140 questions. 140 questions which are very, very important. और उसी से आएगा. Then after that you have to do this one. Exam kit. सब लोगों ने लिखा? Done online student semi? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, sir. Yes, sir. Now, sir, we have understood this. Yes, sir. Now, what are the important points you have to write down? I'll come. Array, what are the 6 important points you'll write down? You will de-recognize the asset at the carrying amount. You will record what? ROU at the value. Lease liability will be recorded. ROU will be depreciated. Lease liability will be unwinded. And gain or loss will be recorded. These 6 sentences are fixed. Question आए तो ये 6 sentence लिख के आ जाओ, marks मिल जाएगा पूरा. You will get the entire mark and do the calculation. Now coming to the calculation, everyone. Yes. So see everyone now. Sir. Now see everyone. Now everyone. Let's take an example. Now किसका example दिए? अफीफ था, ये नेविन था. Now Afif is selling this iPhone, everyone, and he's taking back this iPhone on lease. Let's say he's taking back this iPhone for 3 years on lease. But the useful life of this iPhone is how much? I say the useful life of this iPhone is 10 years. Kitna? 10 years. Now everyone, Afif had recorded the asset in his book. Let's say the carrying amount of the asset was how much, everyone? Carrying amount kitna tha? Let's say carrying amount was 800 of this iPhone. Kitna tha? 800. Now everyone, when Afif is recording ROU, will ROU be recorded on the basis of 10 years or only for 3 years? ROU will be recorded on the basis of 10 years or 3 years? 3 3 years. 3 On years. what basis? 3 years. Because he's taking for 3 years, na? Yes. 3 years only, yes. Now everyone, see here. Can I say everyone, the ROU, sir, how we will calculate the ROU? Can I say this carrying amount which is there is 800? Can I say this carrying amount represents 10 years or 3 years? This carrying amount refers 10 years or 3 years? 3 years. 3. 3? Okay. Others? 10 years. 10 years. Others? Anyone with a new answer? अरे अफीफ के बुक में कैरिंग अमाउंट कितना था? 800 बिफोर ही एंटर इनटू अ लीज. अभी तक लीज में एंटर नहीं किया. It is 800. Can I say if it is 800, what is the remaining useful life of the asset? 10 na? So can I say this asset, the carrying amount which is there is 800. This 800 is representing 10 years or 3 years? 10 years. 10 years, Baba. Yes or no? Yes, sir. Now when Afif is selling this, everyone, Afif is selling and Afif will record ROU. Can I say ultimately what Afif is doing? Out of this 800 was for how many years? 10 years. Out of this 800, now he will calculate the 3 years value and record ROU. Afif will calculate ROU on what basis? On the basis of what? 800. In this 800, there is 10 years hidden. From this 10 years, how many years he will record of ROU? 3 years. So can I say Afif is recording ROU for the right retained. कितने साल का right retain किया उसने? 3 years का. What is the right he has transferred? कितने साल का right transfer कर दिया उसने? कितना था? 10. 7 years right he has transferred. Now when he has transferred, you will record the gain on what? Right transfer, not right retain. वो तो है ही मेरे पास. मैंने कितने साल का right transfer कर दिया है? 7 years. थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा? Everyone, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा कि नहीं? Because examiner requires this term in the exam to give you 1 marks. नहीं समझ में आया. नहीं सब अभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे. I know that is a little because the examiner wants you to write down this term or this sentence in your exam to get 1 marks. Everyone, again, listen me. If I say my carrying amount of the asset is 20,000, I say the remaining useful life of this asset is how much? 10 years, bete.
This carrying amount represents how many years of useful life? 10. 10 Everyone, years. any doubt till here? No, sir. Now, this person is selling this asset. क्या कर रहा है ये? Asset को बेच रहा है. Then again taking back this on what? Lease? Yes, sir. Now he is taking back this asset on lease for 3 years. सबको समझ में आ रहा है क्या? 3 years. Now everyone, you only think the asset which has a value of 20,000, which has a useful life of 10 years remaining, इसमें से कितने साल का अफीफ ने बेच दिया है और कितने साल उसके पास पड़ा है? 7 years sold. 7 years old. कितने साल उसने वापस यूज कर रहा है? वो कितने साल यूज कर रहा है? 3 साल. 3 years. So this 7 years is known as what, everyone? Right transferred. This is known as what? Right Retained. retained. Everyone understood now? Yes, substance over form. Understand my emotions. That's very important. मैं डायरेक्टली आपको सेंटेंस लिखवा देता कि आपको एग्जाम में लिख के आना. उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? The asset which has a useful life of 10 years, again I'm taking back on lease for 3 years. That means 3 साल का मैं यूज कर रहा हूँ. 7 साल का ही बेचा मैंने. 3 years I'm using, the 7 years only I've sold. If I see in substance, if I see the reality of the transaction, reality में क्या हो रहा है? था मेरे पास asset, but मैंने बेचा. पूरा बेचा है क्या? 3 साल वापस मेरे पास ही आ रहा है. घुमा फिरा के कितने साल के लिए बेच रहा हूं मैं? जो 7 7 years. साल, that 7 years benefit you're selling. So gain or loss is calculated on what, everyone? Right retained or right transferred? Transferred. Transferred. Right. ROU is calculated based on what? Right retained or right Transfer. transferred? ROU retained. Retained. सबको समझ में आया? So Yes, अब can समझ में it आया. be right retained? You are calculating on what basis? Carrying amount only, which you have what? Retained. So examiner needs this sentence that ROU is calculated as based on what? The right retained relating to what? Carrying amount. Yes, sir. Understood. Understood. Yes. Chalo everyone, aa jao. Yes, sir. Everyone, please write down this. You have written now below. I write down ROU of the asset is the proportion of the previous carrying amount that relates to the right retained. This is the important term which the examiner requires in the exam to be written to get 1 marks. How ROU is calculated? If you just write down that ROU is this much, examiner will not give you the full mark. Examiner is saying what is the logic? ROU is the proportion of the carrying amount which relates to the right retained. Answer, how do we calculate ROU? Write down the formula, everyone. That is previous carrying amount into fair value of the lease liability, or you say present value of the lease liability. Present value of what? Lease liability and fair value of the asset. Fair value of the asset. Fair value of the asset. Yes, but I'll share the equation back as of now I move class. सबको लिख लिया? सब लोगों ने समझ लिया क्या होता है? राइट ऑफ यूज एसेट इज बेस्ड ऑन व्हाट? कैरिंग अमाउंट व्हिच रिलेट्स टू व्हाट? राइट रिटेन. यस सर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ROU? अरे सर, previous carrying amount into what? Present value of what? Lease liability divided by fair value of the asset. Yes sir. Chalo everyone. So everyone, when will you do the accounting of sale and leaseback? When what is transferred? Control is transferred. अगर कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हो तो क्या करोगे तुम लोग? Record the amount received as loan and do not de-recognize the asset. Now just now I showed you Benito company question. उसमें 9 marks का यही था. You have to explain if control is transferred, what will you do? If control is not transferred, what will you do? 15 marks requirement यही था. Yes sir. So now everyone, write down the case number 1 below everyone. Case 1, fair value is equal to selling price. Case 1, fair value is equal to
selling price, selling price, selling price. Fair value is equal to selling price, selling price, selling price. ये बाकी लोग तुमको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? मेरे को मालूम है 5 घंटा बैठना बहुत डिफिकल्ट है, बट पेपर पूरा थियरी है, इधर दिखता प्रैक्टिकल है, जब एग्जाम आएगा पूरा थियरी आएगा. यस सर. डन एवरीवन राइटिंग? तो चलो एग्जाम्पल लिख लो सब लोग. एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल. किसको मजा नहीं आ रहा है बता सकते हो तुम लोग? हफीफ को नहीं आ रहा है क्या? आ रहा ना सर? आ रहा है. ताविश बोले कि नहीं आ रहा है. सुकांत आ रहा है क्या मजा पढ़ने में? यस सर आ रहा है। हाँ आ रहा है पक्का? यस सर। अरे नहीं भी आ रहा तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना है, पैसे कमाने की नहीं. यस सर। हम्म. बाकी लोग तो साइलेंट ही रहते हैं. यस यस सर। हरी बोलता है क्लास में, मन्नू बोलता है, सुकांत बोलता है, बाकी लोग तो सब चुप ही रहते हैं. ईशान, ईशान की आवाज तो कभी सुनी ही नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं कौन है ईशान, खाली नाम मालूम है. नहीं सर, अभी वो सब पूछा तो था, वो डिपॉजिट वाला और वो सब. अरे तू ही था क्या? हाँ. ओके. जेसना का फर्स्ट डे है, बट जेसना को मैं जानता हूँ, हेक भी आई नो, काव्य आई नो, केशव को मैं जानता हूँ, खुशी गोयल मैंने जानता हूँ, खुशहाल को जानता हूँ, ननीत को मैं जानता हूँ, नेविन एमआईटी से क्या? तेरी आवाज कैसी है? बोल रहे बाबा तो मेरे को फिट हो जाए दिमाग में. हाय सर। हाय, तू पहली बार है क्या बोल रहा हाय? ओके. फरहान. यस सर। यस, बात करते कि नहीं तुम क्लास में? बोलता हूँ सर, बट आज का टॉपिक थोड़ा सा फास्ट लगा मुझे सर। फास्ट लगा? कितने लोगों को फास्ट लगा? लीज थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा सर। फास्ट लगा. हाउ मेनी ऑफ यू फेल कि फास्ट था? वास्ट लगा, फास्ट नहीं था, वास्ट. बहुत सर, हाँ वो तो भी वो फर्स्ट डे वो तो करना ही पड़ेगा. अब लगेगा फास्ट इन द सेंस, द फास्टनेस फ्रॉम वाज फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ऑल यू इंक्लूड इन लीज लायबिलिटी एंड आरओई. यस ऑन? रिकॉग्निशन एग्जामिनेशन में मैं फास्ट नहीं था, आई नो दैट, बिकॉज व्हेन कमिंग टू व्हाट इज इंक्लूड आरओई लीज लायबिलिटी इतना डिटेल में आता नहीं एग्जाम में. दैट यू हैव टू रिमेंबर बाबा. 9 पेपर एग्जामिनेशन है क्या फरहान? यस सर, मेरा 9 पेपर बताया था ना मैंने, जैन यूनिवर्सिटी से। हाँ थोड़ा लगेगा बेटे, 9 पेपर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को लगेगा बाबा, दैट आई कैन गारंटी. इतना भी लगे, इतना नहीं है, फास्ट नहीं रहे. बाकी ऑफलाइन भी बैठे, ये नहीं बोल रहे, थोड़ा नो सर। लगेगा. सुकांत लगा क्या? नो सर। पूर्णिमा फास्ट इतना क्लास हो? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ विशाल ನ್ಯೂ और महीधर को पूछते हैं, महीधर फास्ट था क्या क्लास आज? It's all right only. So I'm referring to the notes also alongside. यस. It's all right only. I'm keeping the notes also on the side, so it feels okay. हाँ आपको नोट्स ओपन रखना है एक स्क्रीन पर, ठीक है? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गुड एक्सेट्रा, अगर आपको नोट्स ओपन रखना है एक सी ऑन वन साइड, और इफ यू टेकन आउट द प्रिंट आउट गुड. लेट्स आ जाता. काव्य फास्ट लगा क्या आज? सबको पूछता हूँ मैं एक एक. नहीं सर नहीं. ईशान. नहीं सर. जिसना. नो सर जिसना बोले कि सर पहला क्लास है, क्या है सर इसमें क्या है? नहीं खुशी. नहीं सर वो थोड़ा बेसिक एफआर का तो पता ही था, तो इतना फास्ट नहीं लगा. देखो एफआर वाले क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा एफआर का एडवांटेज है पहले. खुशी. नो सर नहीं लगा. विद्या. नहीं सर, इट्स गोइंग वेल, विनय. थैंक यू. विनय. नहीं सर, परफेक्ट था. अरे सच में बताना है बाबा, तुम सच बताओ. अरे मेरा इंटेंशन, व्हाट्स माय इंटेंशन दैट यू पास योर एग्जाम. अगर थोड़ा फास्ट हो मैं धीरे करूंगा पेज, ठीक है? सर मैं बोलूं? मैं जिधर बोलूं? जिधर 140 होगा वो 170 जाएगा बाद में. सर अगर आप धीरे करोगे ना तो हम सो जाएंगे हाँ इसीलिए. वो भी है. और कौन बचा है? अश्विनी. फास्ट लगा क्या? अश्विनी से कि सर मैंने आई हैव डन ऑलरेडी, सो देयर विल बी नो सच प्रॉब्लम. हे तुई सो गए. नो सर
ठीक लगा पेज? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, पक्का? यस सर। यस। और कौन है? हरी, हरी को पूछते हैं। हरी को मैंने नहीं पूछा, वो बोले कि सर भूल ही गए मेरे को। हरी कैसे सर मैं लगे वही बोल पेज? रहा था, मैं वही बोल रहा था सर, सब ठीक है, बट वो जो आप लिखवाते हो ना, थोड़ा हाँ सा टाइम दिया करो लिखने के लिए। हाँ, ऐसे बोलो ना। ओके। हाँ वो क्योंकि आप बोलोगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्यों इधर इनका हो हाँ, जाए। मैं जेन्युइन रीजन बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाता है, वो स्क्रॉल हो जाता है ना ऊपर। हाँ तो बताओ, मैं वेट करूंगा। सिंपल, आपको बोलना हाँ पड़ेगा ना। अरे मैं भगवान नहीं हूँ कि मेरे को समझ में आएगा सब 30-40 तो स्टूडेंट्स का माइंड में नहीं पढ़ सकता हूँ ना। वही 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 चीज़ बता रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत आपको क्विक होना पड़ेगा एवरीवन। ओके, थोड़ा बहुत क्विकनेस चाहिए मेरे को लिखने में। यस। चलो अभी आ जाए वापस क्लास में, पक्का? चलो, अभी सब सब लोग बोलेंगे कि सर नोट्स कंपाइल करके दे दो, कंपाइल करके दे दो। अरे वो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। आई नो कि सबको नोट चाहिए कंपाइल किया हुआ एक्सेट्रा एक्सवाइजेड, बट ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ यही नोट्स यूज करो। डू नॉट कीप 3 to 4 नोट्स, यही ओनली वन दिस नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। इसमें कंटेंट भी है, पिक्चर्स भी है, क्वेश्चन भी, सब यही फॉलो करना, अदर देन दिस नथिंग। हाँ, फॉर रेफरेंस पर्पज यू कैन डू व्हाट, यू कैन कीप द नोट्स ऑन द अदर स्क्रीन। लैपटॉप में खुलता है ना दूसरा स्क्रीन, जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को सुनना ही है। यस सर। तो चलो आ जाओ मेरे। आई मेंशन कैरिंग अमाउंट, आई मेंशन दिस, आई एम सेलिंग एट व्हाट प्राइस एवरीवन? कितने पे बेच रहा हूं मैं? 1200। यस सर। नाउ एवरीवन आप लोग बताओ व्हाट इज कमिंग इन, कितने में बेच रहा हूं मैं, कैश कितना आ रहा है? Debit ट्वेल्व what? हंड्रेड 1200. ट्वेल्व Sir. हंड्रेड So what is the value of the asset that is going out? 1000। 1000 1000 1000. 1000. Okay, yeah. Then everyone, what is the lease liability? 900 900. 900. Now coming to ROU, everyone. ROU, how will you calculate? Sir, carrying amount into lease liability divided by fair value of the asset, that is 1200. 750. ये पक्का आंसर करेक्ट आ रहा है ना? 750। यस सर। यस। अभी रिमेनिंग किस तरफ आ रहा है? व्हाट्स द रिमेनिंग, ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड एवरीवन? क्रेडिट। 250 प्लस दिस 1850, 1000। क्रेडिट सर। हाँ, क्रेडिट साइड। गेन। दिस इज व्हाट एवरीवन? गेन। गेन ऑन व्हाट? गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ व्हाट? राइट रिटेन्ड और राइट ट्रांसफर्ड? ट्रांसफर। ये क्या Transferred. हुआ? राइट रिटेन्ड। ये क्या हुआ? राइट ट्रांसफर। मैं बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? 4 बड़े टॉपिक्स: लीजेस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट वेरी सिंपल। इनिशियली थोड़ा आपको लगेगा, एक क्वेश्चन लूंगा, वो एक क्वेश्चन पूरा समझ लिया आप लोगों ने तो पूरा समझ में आएगा। एवरीवन, स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी अटेंडेड प्रीवियस बैच, यू नो वी हैव डन 15 क्वेश्चन निकला, तो पूरा दिमाग फिट होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट, इफ यू अंडरस्टैंड वन लॉजिक, वन फॉर्मूला, डन। टैक्सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। देन कमिंग टू स्मॉल स्टैंडर्ड्स हियर एंड देयर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। Yes, sir. Everyone understood this. The first case where the selling price. Yes, sir. Now, sir, there is another method also to calculate the profit or loss. Many students will use the journal entry approach, or many students will use this. So the other method also you can write down everyone. Liख लो. The method number 2 to calculate the profit. Step 1 is total gain. आपका टोटल फायदा कितना हुआ? That is selling price minus carrying amount. That is 1200 minus 1000. That is 200. हाँ जी सर. Step number 2, gain relating to right retained. Right retained. So how will I calculate? Yes, sir. Right retained. How much is the total gain, everyone? Total gain into present value of lease liability divided by fair value of the asset. So how much will you get, everyone? That is
200 into प्रेजेंट वैल्यू कितना था 900 डिवाइड बाय 1200 150 आएगा एंड देन स्टेप 3 gain relating to what right transfer सर स्टेप 2 में फेयर वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी अपॉन प्रेजेंट fair वैल्यू ऑफ value लीज लाइबिलिटी total gain कितना है 200 present value of lease liability divided by fair value of the asset ओके then here what will be the that is total gain minus gain relating to right retained. So how much is that? 50, sir. How, sir? 200 minus 150. Either use journal entry or this. Which one is easy, everyone? Journal entry. ये इतना टाइम पास है ना? जर्नल एंट्री इजी है. Yes. तो in exam, everyone, you need not mention the journal entry. You will get a rough sheet. उधर कर लो और directly mention कर दो ये है बस खत्म. कोई इशू नहीं. Examiner will give you marks. अगर आपने करेक्ट वैल्यू लिखा है तो एग्जामिनर को भी मालूम है कि सोच के लिखा है. गलत लिखा होगा तो वो भी ढूंढेगा कि कैलकुलेशन किधर है. यस everyone understood the first case and have written or not in the book same. चेरी कंपनी करके क्वेश्चन है आई थिंक. चेरी कंपनी, लेरिया कंपनी, चेरी कंपनी, बेनिटो एंड एक और क्वेश्चन है. इन टोटल 4 क्वेश्चंस. एक्सक्यूज मी. सब लोगों ने लिखा? Yes, sir. आज मालूम है कि क्या है आज तुम लोग? Father's Day. और उसके साथ क्या है कुछ मालूम है क्या? योगा डे. योगा डे. और योगा डे आई नो 24. और संडे. संडे. हाँ Sunday. संडे. संडे. हाँ वेरी गुड. सर व्हाट इज द रीजन फॉर अदर मेथड कि अगर हम जनरल एंट्री से करें तो इजी है जनरल एंट्री अरे से. जो अभी कोई कोई स्टूडेंट ये पढ़ के आए एफआर में तो मैंने दोनों मेथड बता दिए. ओके. देखो आज क्या है, आज रीनीट होने वाला है. तुम लोगों को मालूम है कि नहीं नीट एग्जाम कुछ होता है ऐसे मालूम है? हाँ, टेलीग्राम बंद हो गया ना उसकी वजह से. हाँ इस टेलीग्राम गाइड को बंद है. पेपर लीक हो जाता है. टेलीग्राम जब ही नहीं चल रहा है. मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा टेलीग्राम. रीजन इज व्हाट आज रीनीट का एग्जाम है 130 की 2 मेरे को मालूम नहीं है. 1:30 130 starts it. Yeah. But there are a lot of problems in that as well. Admit cards लोगों का अबू धाबी का सेंटर आया है एक बंदे का. And now they're even saying that that the new admit cards have to be downloaded and the old ones will not work. So it is going to create a lot of chaos. Hopefully it doesn't go bad. How do you know this much? You news. I mean, नहीं कोई रहता है ना कि कोई छोटा भाई दे रहा है कोई बड़ा भाई. इंस्टाग्राम टेरी ने बोला ना इंस्टाग्राम. यही तो चलता है ना अभी न्यूज में. अभी अरे वही फिलहाल चल यही रहा चल रहा है. है. इंडियन एग्जामिनेशन का क्या होगा मालूम नहीं. पिछले अटेम्प सीए फाइनल का एएफएम पेपर आया तो पूरा यही से बना आउट ऑफ द सिलेबस. स्टूडेंट्स रोने लगे. यस्टरडे जब आपका क्लास हुआ था ना आई वेंट टू ऑफिस. मैंने बोला मेरा ऑफलाइन क्लास है. सीए इंटर स्टूडेंट्स बहुत है. टू सीए इंटर स्टूडेंट्स बहुत है. वो आए थे. वो बहुत मतलब ऐसे अभी उनका 24 को रिजल्ट है. उनको 24 को रिजल्ट. वो बोल रहे कि सर नहीं होगा एक्सेट्रा. सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा. अभी क्या करना है? बोला क्या करना है तो आप सोचो. कि सर एसी से करना. तो मैं बोला कि आ जाओ भाई क्या करो. सी एवरीवन नहीं बना कोई कोर्स अपन के लिए नहीं बना. एसी से भी नहीं बना. लेट्स से यू आर ट्राइंग फॉर द पास्ट 1 ईयर नहीं हो रहा है. यू हैव टू गिव योर 100%. अगर नहीं हो रहा है तो समथिंग एल्स इज रिटन फॉर यू तो वो करो. बट यू हैव टू गिव योर 100%.
अभी जब मैं भी उधर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन क्या करते हैं, क्लास चल रही है, दूसरे क्लास में बैठे टाइम पास कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला सितंबर में, क्लासेस चल रही है, दे आर नॉट एबल टू अटेंड, टाइम पास में 20 to 25 स्टूडेंट्स, अभी क्लासरूम में 250-300 स्टूडेंट्स रहते हैं क्लासरूम में, अभी द टीचर कांट सिट एंड से फॉर एवरीवन के यू कम एक्सेट्रा, टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, गाइड, मोटिवेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी वही बैच में उधर रैंक आता है कोई कोई स्टूडेंट्स का, वही बैच में स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते, क्यों, बिकॉज आई हैव सीन दैट क्लास चल रहा है उधर, दे कम इन दिस क्लास इन दे सिट, मतलब जो एसीसी का क्लास है जो ऑफलाइन चलता है एसीसी का, दे कम दे सिट दे डू टाइम पास, एंड जो भी उधर स्टाफ रहते हैं ना बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मानते भी नहीं है। अभी क्या जस्ट उनका 12th हुआ है बाबा, जस्ट 12th हुआ है अभी, तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको करना है तो यू हैव टू सिट एंड डू प्रॉपर्ली बाबा, दैट इज नो सच एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। अभी तो इधर क्या है, मैं चिन्मय से तो ज्यादा खींचते हैं, बोलते हैं कि करो 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 करो, इफ यू डू वेल ऑन, इफ यू कम्युनिकेट, इफ यू शेयर दी फाइल्स एक्सेट्रा, वी ऑल्सो गिव फीडबैक एक्सेट्रा, नहीं तो हम भी भूल जाएंगे कि कोई था ऐसे स्टूडेंट नाम, पहले मैं लेता था बहुत ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अरे दारा ऐसे ऐसे बच्चे कि उनको एग्जाम देना है, मैं उनको मैसेज किया 10 दिन हो गए, 15 दिन कोई रिप्लाई नहीं है, क्वेश्चंस कितना हुआ है, क्या हुआ है, एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। हम आपको भूलने नहीं देंगे सर, हाँ हम आपको भूलने नहीं देंगे, टेंशन ना लो। अरे अरे मैं बताऊं ना, मैं बोला कि अरे यार बाप तुम अब तुम क्लास हैंडल कर रहे हो, अगर तुमको नहीं करना तो क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, तुम एग्जाम फीस कितना लगता है, 25,000, अभी बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, तो जब तो कोई इशू नहीं है, अरे वो इजी होता है टेरी, टेंशन मत लो टेरी, अरे एसीसी में कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है, सब एप्लीकेशन, तुमको जो समझ है तुम लिख के आओ, तुम पास हो जाओगे एग्जाम, बट मेहनत करना पड़ेगा, इधर उधर भी मेहनत करना, इधर भी मेहनत करना, बट क्या इधर द एग्जामिनर विल इवैल्यूएट योर पेपर प्रॉपर्ली, दैट आई हैव सीन बिकॉज माय सिस्टर माय ब्रदर वर डूइंग, मैं हमेशा देता था, उनका भी सीए एफआर, नाउ व्हाटएवर यू लर्निंग इज सीए फाइनल एफआर ओनली, हाँ बट पेपर पूरा टोटल ऑपोजिट है, उनका अलग है आपका अलग है, उनका पूरा लीजेस पूरा कैलकुलेशन आता है, आपको कैलकुलेशन है क्या, पूरा थियरी अंडरस्टैंडिंग, उनको डेफिनेशन से एक क्वेश्चन नहीं आता, आपके 5-5 क्वेश्चन डेफिनेशन से है, तो डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने खुद देखा, मैंने सीए फाइनल का एफआर पढ़ा हुआ पूरा, तो जब मैं उनका लास्ट टाइम का भी पेपर देखा था ना, बीच में एक बार मैं जब बैंगलोर था मैंने पूरा पेपर दिया था, मैंने सिस्टर गिव द एग्जाम, वो एमसीक्यू प्योर यही से बनाए हुए हैं, अरे वो इतना कंफ्यूजिंग है कि कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, एंड व्हेन दे गिव द आंसर ना इन दैट ऑप्शन ए बी सी डी, और उधर क्या बोलते हैं सेलेक्ट वन ऑप्शन, और आंसर दो रहते हैं उसमें ए और सी, अगर तुमने ए भी टिक किया आंसर करेक्ट है, तुमने सी भी किया तो आंसर करेक्ट है, तो ये कैसे होता है भाई, ऊपर लिखा सेलेक्ट वन ऑप्शन, मैं बोला कि बाबा, मैं बोला कि व्हाट आर दे टेस्टिंग, गॉड नोस रियली, either they are testing the what they ratify and go, either they are testing the speed, I don't know, I will not criticize, CA is also very good course, ACC है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही है, so that is the reason I am saying you can't compare etc x y z, so never do that also, if someone is saying कि okay but yeah that course is also good, this course is also good, अगर लोग सीए नहीं कर रहे, एसीसी नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, क्या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है क्या है, नाउ देयर आर 23 लाख स्टूडेंट्स हु आर गिविंग टुडे नीट, अगर उनका नहीं हुआ, खाली हार्डली सिलेक्शन कितना होता है 50,000 to 60,000 स्टूडेंट्स का, बाकी लोग क्या कुछ बनेंगे नहीं क्या लाइफ में, कुछ करेंगे नहीं, करेंगे दूसरा करेंगे, सो डू नॉट हैव दैट माइंडसेट, व्हेन यू गिव योर 100%, आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि अरे जाता हूं, मैं बोला कि तुम लोगों को क्लास चल रहा है, योर पेरेंट्स हैव स्पेंड मनी एक्सेट्रा दे सेंडिंग, अगर नहीं करना तो डू नॉट वेस्ट दैट टाइम, बिकॉज अभी नहीं, वंस लेट्स से 5 years 6 years डाउन द लाइन यू विल रिग्रेट अ लॉट कि मैंने वो टाइम वेस्ट किया, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ओके एवरीवन, चलो अभी क्वेश्चन करते ही आ जाओ, एक क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे। हाँ, how many of you are in your college, everyone? Please raise your hands so that I get to know. How many of you are college? You are still in college? Completed now. Completed now, okay. Others? अभी कॉलेज चल रहा है सर, you can raise your hands. Completed, okay. So most of the students are completed. कोई इशू नहीं, completed, okay. No such thing. ओके करो बाबा क्वेश्चन, ये जो एज है ना भी आपके पास 1-2 साल कॉलेज के बाद, इन योर कॉलेज लाइफ ओनली यू हैव टू बी
uncomfortable with all the situation. If you're comfortable everywhere ना, let's say जो आपको पसंद है आप वही कर रहे हो, you're not trying anything else, so it will be difficult for you because when you go to corporate world ना, everyone बहुत अलग treat करेंगे आप लोगों को. You will say कि सर क्या हो रहा है? Anyone working here? Yes. कौन? यस सर, यस सर। कैसे ट्रीट करते हैं कॉर्पोरेट में? सर मजा आता है सर। देखो आवाज से भी मालूम पड़ गया, हरी की आवाज से. विद्या, व्हाट डू यू से? It depends on your attitude also. If you have an attitude to learn in life, Yes. then and if your naseeb अच्छा निकला, so Your it can team is work out good. in. Your manager is good. Yeah, that's what. Naseeb is manager only. So एक्चुअली मैं मैनेजर हूँ, तो मैं अपने जो जूनियर है उनको संभाल के रखता हूँ। ओके ओके, तो हरी को इतना टेंशन नहीं है, नीचे है काम करने वाले. मेरे है नहीं थे, बस ऊपर गाइड करना है मुझे। बढ़िया है. बिकॉज 2 days बैक मेरे एक फ्रेंड का कॉल है, इज वर्किंग नी भाई, तो उसने बोला बाप रे बाप क्या पॉलिटिक्स होती है, बाप रे बाप. तो यू हैव टू से नो ऑल्सो समटाइम्स. सर वो किधर नहीं खतरनाक है, होता है पॉलिटिक्स खतरनाक politics. है सर, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है। हाँ, exactly. कहाँ नहीं होता है. And unless and until वो politics को, if you don't know how to tackle it, you won't be able to handle life. Yeah, Even yeah. normal situations in life, you won't be able to handle it. That is Yeah. what I personally feel. So that is the reason I'm saying that when you're in your college life, try to do whatever you can do college में. जो भी बोलते हैं ये participate करो, ये करो, साथ में पढ़ाई सब कुछ करो, मैनेज. फेलियर है, सक्सेस है, सब चलता है. So that your mindset will become strong. Because I've seen many students, अरे कॉलेज में फर्स्ट पेपर लिखते एसीसी का नहीं होता है तो इतना उदास हो गया कि एसीसी ही छोड़ देते. मैं बोला कि अरे पहली बार दिए तुम लोग, ये प्रोफेशनल एग्जाम, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं कि तुम्हारे टीचर पास कर देंगे तुम लोगों को, तो स्टोरी लिख के आ गए. नहीं. सब लोग पढ़ो क्वेश्चन, अभी करते हैं क्वेश्चन. बहुत हो गए तुम लोगों को, माइंड फ्रेश हो गया, अभी आ जाओ अभी क्लास में. On 1st January 2004, B sells an item of equipment to F. कौन किसको बेच रहा है? B to F for its fair value of 1 million. The equipment had a carrying amount of 800,000 prior to the sale. The sale represents the satisfaction of performance obligation in accordance with IFRS 15 revenue from contract with customer. IFRS 15 पूरा theory है. Yes sir, this is standard which is entire theory. Yes sir. And they have mentioned that IFRS 15 conditions have been met, so IFRS 16 leases can be applied, sale and leaseback. B entered into a lease with F for right of use asset. So that is a person known as who? B. That is a person known as F. So what B is doing? B sells the asset on one side and again take this back on what? Lease. B enters for right of use asset for the next 4 years. Okay. Annual payment is 200,000 are due at the end of each year. The interest rate implicit, okay, implicit rate they have given 9%. The present value of the lease payment is how much, everyone? $650,000. The remaining useful life of the machine is much greater than what? The lease term. तो useful life बहुत ज्यादा है, हमारा lease term कम है. Yes sir. So first record, everyone, make a rough journal entry so everyone, so that it becomes easy for you to pass the or to write down the answer. Debit what comes in cash? What is the cash coming in? 1 million, sir. Credit what going out? Asset going out, sir. 800,000. Credit lease liability, how much is that? 650,000. And then what, everyone? Debit ROU. ROU is how much? Sir, carrying amount, that is 800 into present value of the lease liability divided by fair value of the asset. कितना था ये? 1 million. So how much is this, everyone? कितना है? नहीं इसमें बता ना. 5,22,000. 5,22,000. 520. 520. 520. So which side the difference? 520. Okay. Credit side. Okay. 70. 70. Okay, 70,000. अरे इतना ही है बस, सेल एंड लीज में और कुछ नहीं है. Then the other two cases, small one point you have to understand, done with sale and lease back.
Everyone, So, can we? sir, Yes. when we have questions like this and there is a small element of calculation involved, is it preferable to do it in the word processor or in the Excel? I say do in Word only. Simultaneous bracket में करते जाओ, because you shift to Excel. That first of all, you know that platform is what, here and there multiple exhibits you open, you cancel, etc. Yeah. I say do in this. We'll do those. अपन करेंगे. I first want you to enter into the zone how to frame the answer. Then I'll do questions on CB platform also. Okay. कैसे क्या करते हैं, etc. Thank you. So that is the reason when I write down why do I create brackets. Do that. Have a calculator. Fat. Be quick, because you open Excel. आप करोगे. हाँ, some students will feel Excel is easy. If you are writing the entire answer, write entire answer in what? Excel only. But I think AFM paper में हम लोग को बोला था that you have to learn to segregate the written part of the answer to the word processor, and the calculation should be entirely in the Excel. Examiner sees what? Examiner sees what? Answer. Simple. I say for SBR you have to follow what, everyone? Word only, पापा. मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन भी करूंगा. आने तो ये टॉपिक ऐसे जिसका प्योर क्वेश्चन रहेगा. अपन करेंगे कल. Tomorrow we'll be doing a remeasurement entire question I'll be doing that. If we have time now, time होगा नहीं. If we have time, remeasurement basic I'll discuss. Nothing, again present value only that. Okay. We'll do a question. So there is no such question from this one, etc. I will do. Yes, sir. Chalo, everyone. So now can we frame the answer, everyone? Yes, chalo. How will you frame? What is the first point? As per IFRS 16, the condition should be satisfied. Can I say, as per IFRS 16, it is a sale and leaseback transaction. What is this, everyone? Sale and leaseback transaction. As IFRS 15, as per IFRS 15, performance obligation is what, everyone? Performance obligation is satisfied. This is required, everyone? Yes, sir. ऐसे start करना. Then B will do what? So B will de-recognize. Write down the simple. जैसे journal entry pass किया, write down one sentences done. B will de-recognize the asset. B will de-recognize the asset and recognize. Sorry, my bad. ये ऐसे मत. De-recognize the asset, that is de-recognize the carrying amount of the asset. और asset बिल का कोई इशू नहीं है. Carrying amount of the asset कितना है वो? $800,000. Yes, sir. और 0.8 million. अगर मिलियन में लिखना है तो मिलियन में. Yes, sir. Then B will recognize ROU based on what, everyone? Right retained. Based on what? Right retained. That is what, everyone? That is proportion of what? Carrying amount. Proportion of carrying amount. Yes, sir. Value कितना बाबा? B will recognize ROU based on the proportion of the carrying amount, that is right written. If you have written this way also, no issues. If you have written this way also, there is no issues. So it was how much we had done above? 600 into, sorry, my bad, 800 into 650 divided by 1000. 520, yes, sir. $0.52 million. Yes, done with this. Then lease liability. B will recognize lease liability that is B will recognize lease liability $0.65 million. B will recognize lease liability, that's 0.65. Yes, sir. Yes, sir. Done with this. Then now everyone gain. Can I say the gain
on the gain on the or the gain relating to the gain relating to the right transferred will be recorded in P&L under operating category. Operating category. That is how much, everyone? $0.07 million. Yes or no? $07 million. Yes, sir. Everyone, if you're doing the calculation below, show this, that refer working note, etc. Or if you're doing in bracket the entire value, mention cash, etc. or minus. See what you can do. Record this value. इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो. Plus these two, minus these two, you will get the value. Yes. That is 1000 plus how much? 520. 520 brackets minus what? 650 plus 800. Huh? Yeah. Simple, done. Yes, sir, bracket done. Now, for lease liability, what will you do once you record lease liability? Unwinding. Lease liability. Unwinding should be done, and the interest will be recognized in P&L under financing category. Under financing category. कितना है वो? Calculate करो कितना था ये? 650 into what is the percentage we had? 9% की 10 था 99999. 58500. 0.585 million correct है क्या? नहीं 0.05 होगा. 0. Yeah, yes. Then, so the carrying amount of lease liability at the year end and in SOFP is 6,50,000 less interest 585. ये वाला payment was how much? 200,000. $508500. Yes. ROU is depreciated. And depreciation. Okay, sorry, my bad. ROU is depreciated over the lease term, and depreciation is recorded in P&L under operating category. Yes, sir. Operating category. That is how much, everyone? ROU was 520, na? 520 tha, yes. Your lease term 4. $125 ki 130? 130. 25 and 5 year. 130. Yes. Therefore, the carrying amount of ROU as at the carrying amount of the ROU, have they given the year and year? कुछ दिया है क्या year? नहीं दिया. दिया. Okay. As at 31st/12/2004 is 5,20,000 minus 1,30,000. Under non-current asset. Yes, sir. Under non-current asset.
सर यस सर ये लास्ट पार्ट लिखना इम्पोर्टेंट है क्या कि ईयर एंड पे क्या क्या बैलेंसेस कहाँ पे नहीं रिप्रेजेंटेशन? तो डिपेंड करता पड़ेगा, क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स से आए तो पूरा लिखना पड़ेगा। सर If इस क्वेश्चन question, में तो सिर्फ if the 1 जनवरी का पूछा था मैंने। yes, what they've asked everyone in the question, if you see, only 1st January. Why I have written by chance in the exam, if it comes, what will you do? You have to write down. Okay, I know कि 1st Jan तक ही दिया, तो 1st Jan means what? Sale and leaseback only you have to do. Unwinding depreciation you need not mention. But read the question. If they are asking, explain the accounting for the year, then what will you do? पूरा करना पड़ेगा. Yes sir. सब लोग देखो. So, will this depreciation be accumulated depreciation in Yes, the yes, balance yes, sheet? yes, 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 yes. Sir, Hmm? so carrying amount of lease liability should be 688,500 alwa. 6. कितना आ रहा रे? अरे 20 not 20 not 2 lakh 2 lakh. Kushal sir. Okay, sir. Done everyone? Done. Then now what will take? Break. After break, Right. 2 more cases. Yes sir. So now the time is everyone 12:45. Be back by 1 everyone. Yes sir. Yes, Kavya. No, sir, it was done by mistake. Okay, okay, whatever.
Everyone back? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So any doubts to anyone in the basic of leases? No. So see everyone. Okay. Everyone, now please understand one important point which you have to understand, which has been tested in the exam. Everyone, what did I mention? A person is that this person was कौन था? Nevin. वो example continue करते हैं, Nevin and Afif. Now everyone, when Afif is selling the asset to whom? Nevin. And Afif will be taking this back on what? Lease, iPhone. Yes, sir. Now everyone, I say that Afif has a option to repurchase the iPhone back. What I'm saying, Afif के पास क्या है? Option है. Afif has an option that he can repurchase this iPhone back from whom? Nevin. If he has an option to repurchase the iPhone, everyone, will the control be transferred? Or will this be a sale? No. IFRS 15 condition will not be satisfied. It will not be a sale. IFRS 15 condition will not be satisfied, everyone. If IFRS 15 condition is not satisfied, can you do sale and leaseback accounting? No, sir. No. Then what will Afif record the amount received as? Loan. Loan. ये 4 mark का requirement straightforward आया था. Benito company question I mentioned. This we learn in IFRS 15. This topic is in detail in IFRS 15. But here, by chance, many students will be doing the question in the coming week. So I'm mentioning this point. Yes, sir. Chalo. Simple. Yes, Aja. If a person has an option, again, we will cover this in detail when we come to what, everyone? IFRS 15. Yes, sir. So what did I mention? If the lessee has the option to repurchase the asset back, will it satisfy the IFRS 15 condition sale? No, sir. No, no. Yes. Chalo then. You're done. Now we will be doing the case number. Which one, everyone? 2, everyone. So write down, everyone, the case number 2. Case number 2, where the fair value is less and what is more? Selling price is more. Yes, sir. The fair value is less and the selling price is more, sir. There are 3 past papers regarding this and 1 with the normal case. Total 4 questions. 1 is the above one, which we have done equal. And there are 3 examples regarding this. Yes, sir. Example, write down in there. I say the carrying amount of the asset is carrying amount कितना 1,100. Yes, sir. No. Write down 100 only. Carrying amount is 100, everyone. I say the fair value is 120. The selling price is 150. Selling price ज़्यादा है ना? Selling price is 150. I say present value of the future payments. The present value of the future payment is 90. The present value of the future payment is what, everyone? 90. Yes, sir. Yes, sir. Present value of the lease payment बोला कि present value of the future payment बोला मैंने? Future payment, yes, sir. Now see, everyone, what will happen. Everyone, Afif ने क्या किया था? Or let's take a new example now. Now, everyone, let's say मैं asset आपको बेच रहा हूँ. I am selling the asset. What is the value in the market, everyone? 120. But I am selling this to you for 150. Will you take? मार्केट में 120 में मिल रहा है, आप 150 में परचेस करोगे क्या मुझसे? नहीं. No. बट आई से मेरे को 150 चाहिए. You have to give me 150 only. I am saying that I need 150 only. What will say, sir? नहीं चाहिए सर, कोई और है. Yes or no? But I said that you only have to give me 150. Then what will you say, everyone? ये जो difference है ना बेटे, आप क्या बोलोगे? Sir, in the market the price is 120. We will give you 120. Sir, if you need 150 today cash, we will give you 150. No issues. But this 30 extra which we have given is what? A loan. सबको समझ में आया? If I'm selling the asset to you at a higher value when compared to the fair value, that 30 is what, sir? Loan. You will not give me 120. You will not give me 150 for the asset. You will say, sir, 120 is for the asset.
And 30 क्या है extra? It is for the loan, sir. It is what? It is for the loan. So yes, sir. So now this is only the additional point which we have to learn, that whenever the fair value is less when compared to the selling price, the difference is what? A financial liability. Sir, how do we do the accounting of this financial liability? IFRS 9. Sir, exam में करना पड़ेगा क्या? नहीं. Just mention this will be treated as per IFRS 9, done simple. So now everyone, what will be the entry, everyone? Debit, credit. Debit, what comes in cash? How much is the cash coming in? So 150 is the cash coming in. Sir, asset is going out at what value? Sir, 100. Now everyone, the present value of the future payment is 90. But out of this, what is the lease liability? 90 minus 30, that is 60. The 30 is relating to this loan, we reduce it. And we say present value of the lease liability is what? Only 60. So credit lease liability, credit loan, 30 and 60. Then debit ROU. What is ROU? Carrying amount into 60. 60 divided by the fair value of the asset, not selling price. 120. Yeah, 120. How much is this? 50. So which side is the difference? Everyone say me. The difference is which side, everyone? Debit side or credit side? Credit. May only one new point, that extra amount is what? Loan. Record it separately as loan. Do not include in lease liability. Simple. On the credit side, you are getting everyone? Kitna? 10. Everyone understood the case number 2. Difficult like a case number 2. The values will be given. Just do it. लग रहा बारिश आएगा. आ गया क्या? अरे फाइनली इधर बारिश आ गई पुणे में. पूरा ठंडा हो गया. अरे इधर NIP में धूप है सर. हाँ, धूप है क्या? तो फिर इट इज लाइक सनी, कर्टन्स लगा के बैठा हो. अरे इधर तो बारिश हो रहा है बाबा. हाँ, अरे क्यों नहीं आए राज? मेरे को ठीक नहीं था आज सुबह इसके लिए. ताबिश को सबका चाहिए, कौन क्या कर. अरे एवरीवन डन राइटिंग, अंडरस्टूड दिस? पक्का सब लोग समझ गए? क्या एडिशन है? व्हाट्स द न्यू पॉइंट एवरीवन? दैट्स extra amount will be. So everyone, from method number 2, if you want to calculate the gain, how will you calculate? वो भी कर लेते. Method 2, gain. So what is the step 1, everyone? So step 1 is total gain. So total gain कितना हुआ? Fair value minus carrying amount. Do not take selling price. 120 minus 100. That is this one, sir. Step 2. Gain relating to right retain. 20 into 60 divided by 120. That is 10. Step 3. Gain relating to right transfer. 20 minus 10. Did we get 10? Yes, sir. Same. Whether use method 1 or method 2, the answer is same. Yes, sir. हाँ. सब लोगों ने लिखा ये केस 2 सबको समझ में आया? So today if you see we have done good number of questions also and same आपके एग्जाम किट में भी है. Yes sir. अब उसका पीछे का आंसर देख के मत शॉक मत होना, ठीक है? Yes, first read the question, write down the points as we are writing down, type it out. Then what you do? Then refer the answer, how you can improve. Every time your aim should be that in P-level exam, every time improvement is required. There is no such perfect answer everyone. 3 or 4 students have already sent me the answer. I've sent them voice note. So improve on that. What are the additional points you can add?
यस सर, सब लोगों का हुआ? कैन आई गिव द क्वेश्चन नाउ? करते क्वेश्चन, चलो आ जाओ। नाउ एवरीवन, दिस क्वेश्चन विल बी डूइंग फ्रॉम अ प्री मॉक ओनली। कौन सा प्री मॉक है ये? मार्च। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, सब लोगों को दिक्कत था ये क्वेश्चन में, और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार। Everyone have given the time. The requirement is for 8 marks. आराम से पढ़ो। 8 marks means 16 minutes. Maximum you can spend 6 minutes to read the question. Not more than that. I've already shared the question. You can refer to that also. और if not, you have the access of the portal. उसको भी अगर आपने open किया है, तो you can see that the question bank also is there. अब question bank में देखिए extra question भी है, a basic question, but we'll directly do this question only. Then exam question only, everyone. How many of you have done reading? Done, sir. Done? Okay. Done, sir. Done. किसने पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा और किसने पहले केस पढ़ा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट? कि पहले Yes, sir. केस से स्टार्ट किया था तुम लोगों ने? केस पहले से? रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट। Requirements first. You have to read the requirement everyone first. Explain with supporting calculation. Explain भी करना और क्या भी करना साथ में? Calculate. How the sale and leaseback arrangement should be accounted for G's financial statement for the year ended 31st December 2007. 8 mark question. Yes, sir. 8 marks means 2 marks will be for calculation, 6 marks will be for this one. Now see everyone. One of G's investment properties website. So they're saying some investment property IS 40 which it leases to tenant. G builds this property 2 years ago. कब बनाए थे property? 2 साल पहले. Following the sustainable building guidelines recommended by the government. Government has mentioned. सब फालतू का है कि नहीं है? Is this relating to accounting? No. Subsequently, G has not followed these guidelines in its new construction project deal. Okay, some guidelines have been given by the government. They are not following. कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है, penalty, etc. etc. कुछ भी हो सकता है. G applies the fair value model to investment property. Which model? Investment property they apply fair value. I mentioned leases का क्वेश्चन आएगा तो investment property IAS 16 will be related. In its interim statement of financial position, interim means what? Mid of the year. Company every year, every 3 months the company will probably publish the balance sheet and P&L. उसको क्या बोलते हैं? Interim statement of financial position. At 30th June. Yes, sir. But my year end was what? 31st December. The carrying amount of the W tower, that is the building, was equivalent to its fair value of 20. The fair value was unchanged at. Can I say the fair value was same? Fair value. CC. The carrying amount was equivalent to what? Fair value. So carrying amount and what is equal here? Everyone, carrying amount and what is equal? Fair value. Fair value, not Fair fair value. value and selling price. Do not be in that. Yes, sir. On 31st December 2007, G entered into the sale and leaseback arrangement in relation to the website in order to realize cash to fund a new construction. So simple, sir. Why are we doing this? To get cash.
The transfer of W met the criteria. अरे सर बोला है क्वेश्चन में क्राइटेरिया, तो टेंशन नहीं है, सेल एंड लीजबैक करना है. Under the terms of the sale and leaseback arrangement, W was sold for how much? But मेरा fair value कितना था? 20. I am selling this for how much? 22. So what is that excess to? Loan. So write Liability. down that the excess Loan. of 2 Loan. million will be recorded as financial liability 1 marks. Simple sentence. Yes, then. And immediately leased back for the term of 10 years. Payments are made in advance and commenced on what? 31st December. अभी payment arrears में हो रहा है कि advance में हो रहा है? Advance में. Yes, sir. Then lease payments are how much, everyone? 1.25 every year. How much you'll be paying? 1.25. Then if stated carbon emission targets were met in the previous 12-month period, वो क्या बोल रहे हैं? If in the previous period, if your carbon emission जो pollution है वो कम होगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1.25. Yes, sir. Then if the targets are not met, an additional 0.2 payment must be paid each year, making the total annual lease payment to how much? 1.4. These targets were not met in the year. If it is not met, everyone, then what will you do? 1.4. Everyone, how much? 1.4. 1.4. Can I lock your answer? This is variable or not? 0.14 is variable or not? Variable. Variable. When will you include? If not satisfied that That's were not made. Everyone, we did something known as substance. In substance fixed payment. How much is my value, everyone? 1.4 dena. Even though the target is not met, what is the bare minimum I have to give? 40. ये क्वेश्चन में यही ट्रिकी था, बट बाकी कुछ नहीं था ट्रिकी. Here, everyone, my payment is normally how much? 1.25. If the target is not met, how much should I pay? 1.4. Now, everyone, remember, अपन ने in substance fix किया था. I mentioned that I will pay you 100 rupees per unit produced. But what was the bare minimum I had given you? 1 lakh. That 1 lakh will be part of what? Lease liability. Will you include that remaining? No. So here your lease liability will be how much? 9.3 or 9.5? That you have to decide in this question. Here it will be 9.30, everyone. Why, sir? Again, this 0.15 is variable or not? Is this depending on some certain future event or not? Sir, depend करेगा. किसके ऊपर? Whether we are able to reduce the emission target or not. Now, will you consider that variable payment is only included if it is based on what? CPI or inflation. And here, what is the bare minimum fix you have to pay? 1.25. That 0.25 you will not consider. 0.15 you will not consider. So your lease liability was how much, everyone? 9.3. Many students have taken 9.5. Out of 8, how much you will get? 6 marks. Even though if you have taken 9.15, everyone, 5 to 6 marks you will get in the exam. So do not worry. समझ में आया? Clear? Can we start with this, everyone? Sir, again, everyone explaining you. What is the lease payment? 1.25. And 0.15 I will give when? The emission target. If emission targets are not satisfied, I have to pay. But will you say that, अरे इसको ignore ही करना है? In substance कितना fix है? 1.25. Yes, Manu. सर वो ऊपर में लास्ट लाइन में वो लोगों ने ये क्यों लिखा है कि टारगेट मीट नहीं हुआ, मतलब उन्हें कंफर्म पता चल गया था. The targets were not met in the year. उन्होंने क्या बोला? ये ईयर में टारगेट मेट नहीं हुआ. सर ये तो अगर नहीं हुआ तो अपन को पूरा पैसा देना है ना. अगर नहीं हुआ तो पूरा पैसा देना है कि नहीं? Yes, sir. Yes or no, we have to give. But when coming to in substance fix, what did I mention? You only include what? The minimum amount which you have to give for sure guarantee. अभी आज तो इधर मालूम है. Today we know the target. But coming for the future 4 years, do you know? नहीं. So what is the reason I mentioned? You don't know ये estimate इसको include नहीं करते. Even though they have given the target to confuse you. क्यों दिया है? Confuse करने के लिए दिया है. Yes. Last point. Yes, sir. Chalo everyone, let us start with the answer. Can we start? Yes. Chalo then. As per
IFRS 16, the transfer of property meets the criteria of what, everyone? Meets the criteria of IFRS 15 and is treated as a sale. So G will de-recognize what? Investment property. G will de-recognize the investment property. Now, when coming to above, what did I mention? I mentioned we record this as per IFRS sale and lease. But here I have recorded we de-recognize. एक ही point में include कर दिया मैंने. Then G company must recognize ROU and lease liability, right of use asset and lease liability. Now some students will do what? Now directly they will write an ROU, they'll calculate the value here. Examiner will give you marks. Simple. Must recognize ROU and lease liability on the day the transaction is done. It's done. Yes, sir. Now I'll come to the other point. Yes, sir. G must recognize ROU and lease liability on the day the transaction is done. As per what? IFRS 16. Yes, sir. Done with this. Now मैं बोलूंगा the excess proceed कितना था? The excess proceed. Even though we did not come to what? That 1.25 or 1.4. But before that I'm writing these points, I'll get marks. The excess proceed of 2 million over the fair value of the asset represents a financial liability. Yes, sir. Done with this. One more marks I got. 3 marks मिल गए मेरे को. I've written 3 simple sentences, 3 marks. Then yes, sir. Now what is lease liability? चलो mention करते. Lease liability is the present value of future lease payment, including what? Including fixed in substance payment. Yes, sir. Only. Variable payment are excluded unless they depend on what? Index. हाँ, ये थोड़ा मैंने डिटेल लिखा. If you would have mentioned that variable payments will be only include on the this one and in substance, you'll get marks. Yes, sir. So what is my this one? Lease. Now 4 marks done, everyone. Now I'll mention what is this one. 4 points. Yes, sir. So the minimum lease payment is 1.25 million. The minimum lease payment of is in substance fixed. Therefore, must be included lease liability. Yes, done. Therefore, the lease liability is what? इधर ऐसे लिख लो, इधर लिख लो. Therefore, lease liability is what?
The lease liability. $9.30 million. Yes, sir. Now mention ROU. The right of use asset. The right of use asset is measured based on the proportion of the carrying amount. That is right retained. और वैल्यू कितना है? Carrying amount was equal to the fair value. So fair value was 20. Present value of the lease liability 9.30. And सर 9.30 में से 2 माइनस नहीं करेंगे क्या? सर 9 किस पे से? 9.30 में से 2 माइनस लोन का अमाउंट सेपरेट करना होगा Yes. It mentioned few. No. See everyone. What they mentioned. Have they mentioned the total payment or future lease payment only? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इट्स ओनली लीज पेमेंट तो व्हाट विल आई डू देन? नहीं, खाली मैं ऊपर क्या बोल रहा था? टोटल पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स. इधर क्या बोला? फ्यूचर लीज पेमेंट Yes or no? Difference is there or not, everyone? यस सर Everyone, you only say if your fair value and your carrying amount is equal, will there be any gain? Will there be any gain? तो इसमें गेन आएगा ये क्वेश्चन में? Will there be any gain? No gain. Why? अरे तुम लोग देखो टोटल गेन कैसे निकालते थे तुम? Fair value minus what? Carrying amount. In the given question, what they have mentioned? The fair value and the carrying amount is same or not? So will you have any gain? No gain. Everyone understanding or not? तो कैरिंग अमाउंट कितना आएगा सेट का बताओ? लेट मी सी हाउ डू यू कैलकुलेट. 9.30 ही रहेगा 9.30. अदर्स 20 से ही डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करोगे तुम? 20 20 only ना? Everyone, will you divide with what? 20. So if you divide with 20, what will be your ROU then? ROU कितना होगा? 9.30 9.3. समझ में आ रहा है तुम लोगों की कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस पक्का इधर तक समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो तुम लोग किधर मिस्टेक कर रहे हो मैं बताओ अभी नाउ कमिंग टू द कंसंट्रेशन पार्ट विच द एग्जामिनर इज प्लेइंग विथ यू. सब लोगों ने क्वेश्चन बराबर से पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? दिस वैल्यूज आफ्टर व्हाट? This values after what? First payment. This values after first payment. That means the total value of the lease is how much? 9.30 plus what? 1.25. तो कितना आया present value of the lease liability? अरे बाबू क्या? 10.5. सर एडवांस का केस है क्या? एडवांस का केस है? हाँ क्वेश्चन में बोला था ना एडवांस का 10.55. Everyone, will you take the present value of lease liability as 9.3 or 10.55? 10.55 इधर क्या बोला है? After first payment. But above what did I mention? Your ROU will be what? ROU will be the total value of the first payment also. So here what will happen? Here, sir, the lease liability will be how much? When you calculate the ROU plus what? 1.25 divided by what? 20. तो कितना हुआ ये? 10.55 is your ROU. ये एग्जाम में क्लिक नहीं होगा. कब क्लिक होगा? When you read the question carefully. When we took ROU, everyone in the advanced case, did I reduce the first payment and take, or did I take the entire value? मैंने entire value लिया था ना? देखो इधर. When we did the basic example of advanced, everyone, did I take the entire value or not?
On the day one only the liability value is reducing or not? But ROU क्या होगा? ROU पूरा होगा, which includes the first payment also. Yes, sir. The present value of the lease liability should be taken entirely. Yes, Manu. सर वहाँ 1.4 क्यों नहीं लेंगे? उस दिन तो हमको पता था कि हमारा टारगेट मीट नहीं किया है, तो फर्स्ट पेमेंट तो 1.4 ले सकते हैं। बट बेटे लीज IFRS 16 क्या बोलता है? खाली आपको इन सब्सटेंस वाला पेमेंट लेना है। जब आप डे वन पर कैलकुलेट करोगे आपको मालूम होगा क्या? नहीं ना सर, बट 31 दिसंबर को तो उन्होंने ही लिखा है कि फुलफिल हो गया बट टारगेट। वो करना ही नहीं ना, स्टैंडर्ड ने पहले ही बोला है, वो एस्टिमेट है। आज मालूम पड़ेगा, आगे वाले 4 साल का मालूम है क्या? सर तो आगे वाले 4 साल का तो हम लोग 9.30 ले लिए हैं, बट आज वाला तो हमको पता है। नहीं, किधर बोला उसमें? हाँ ये ले ले, खाली एक ये करंट ईयर का डालोगे और आने वाले 4 साल का क्या करोगे? सर उसका तो पता नहीं है, तो 9.30 पर। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं करना है, नहीं करना, वैसे नहीं करना है। अरे ऐसे करोगे तो मैनिपुलेशन हो जाएगा ना। इफ यू थिंक फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टेड ऑफ 1.25 यू विल से सम अदर वैल्यू। ओके। ये स्टैंडर्ड ने फिक्स बोला है, दैट इज द रीजन आई मेंशन इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट ओनली विल बी इंक्लूडेड। यस सर। तो आर यू विल देयर बी एनी गेन और लॉस? क्या लगता है तुम लोगों को? नो गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड। और ऐसे लिख दो, नो गेन और लॉस, ऐसे नहीं सर, नो गेन और लॉस, नो गेन और लॉस will arise on disposal because the carrying amount and the fair value is what? Same. Yes, sir. सब लोगों ने लिख दिया? अंडरस्टूड विद दिस? कितने पॉइंट्स लिखे अपन ने विद कैलकुलेशन? 1 2 3 4 5 6 7 and one more. Can I say we have written all the points or not? Yes or no? Can I say, you can mention one more point, can I say the 0.125 125 नहीं 0. कितना था वो? 0.15 ना? 15 0.15 will be recorded in P&L as an expense, as it is not included in what? Lease liability. Yes sir, as it's not included in lease liability. I know ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, but the aim is what in the exam? To understand कि sir, when next time if a question comes regarding in substance, we will be careful. We will be what everyone? Careful. Directly I've taken an exam style question, pre-mark. लोन वाला देखो, दो चीज है। एक तो मैंने ऊपर जब लिया था मैंने क्या बोला? टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट। इधर क्या लिखा है? इन्होंने ऑलरेडी सेपरेट करके दिया है कि नहीं? देखो नहीं, पूरा पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। फ्यूचर लीज पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ सर। फ्यूचर पेमेंट अलग होता है, फ्यूचर लीज पेमेंट अलग होता है। डिफरेंस है ना, है कि नहीं डिफरेंस? अरे बहुत छोटा डिफरेंस है बाबा। देखो टोटल पेमेंट, टोटल फ्यूचर लीज पेमेंट। टेबल में देखो क्या लिखा है एवरीवन? Understood everyone? They've already separated it. If they would have mentioned in the question total payments, then what will you do? Minus करोगे. See everyone, in the exam, now the examiner will, in this question, the examiner will never see your answer is right or wrong. The examiner will see 3 points and give you full marks. First one is what? That you have identified that is in substance fixed payment should not be included. The second one, you have identified that what? That your gain or loss will not be there. And the third point, the examiner will see what? Now the third point, the examiner will see that you have included this and done properly or not. And if you mention that the 2 million will be recorded, this one, the examiner will give you full marks. Even though you have not reduced, etc. By chance question bhi aaya, the examiner will give you full marks. Because examiner kya dikhta hai? Whether your understanding is clear or not. Yes, sir.
Any doubts to anyone in the second case? I hope everyone have framed the answer. Clear? अभी चले last case में. In the last case, a very small point. Here it was financial liability. There it is addition to something else. चलो. हुआ सबका? Can I move forward, everyone? Online students, confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see everyone, now one more question. Then after that you can see one more question, Cherry Company. ये भी एक past paper which is not in your Kaplan, but it was there in the old Kaplan. आपको ये करना पड़ेगा as what? On this one, yes. So अच्छा खासा practice हो जाएगी सर. Now everyone write down the last. Fair value is more when compared to the selling price. The last case. Fair value is more when compared to the selling price. अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया, एक ही एग्जाम में आया. September 2025 एग्जाम this was tested in one of the set. उसके बाद में कभी कोई स्टूडेंट ने बोला कि नहीं कि सर ये केस आया वापस. So write down the example. I say the carrying amount is 100. Fair value is 120. Selling price is 110. So it is lower, sir. I say present value of lease liability. Present value of lease liability, write down 80 everyone. तो everyone, market में price कितना asset की? 120. But I am selling to you for 110. Why will I sell you at a lower value? मैं आपको कम में क्यों बेचूंगा? Today I am selling this phone which has a fair value of 120. I am selling this to you at 110. Why? Distress situation. Yes, what? Come back. Distress situation. Distress. Okay, good to know that. But okay, distress situation. Yes, then. Immediate cash requirement. Yes. See, the standard is saying, assumption है, ठीक है? Standard क्या बोल रहा है? If the value of this phone is 120, everyone are ready to give 120. Why I am selling to you for 110? That means already 10 rupees you had given me 1 year ago or 2 years ago. ऐसे दिया था आपने पैसा मेरे को. आपका पेंडिंग है पैसा. समझ में आया क्या? 120 is the value of this phone. I am selling to you for 110. That means you had given me 10 rupees before only. पहले ही आपने पैसा दे दिया था. आपका 10 रुपए मेरे पास पड़ा है. Understood that 10 rupees is what? Prepayment. And what will you do for this prepayment? Add to ROU. That means before the commencement only payment is done. Add to the ROU. Yes, sir. Add to the ROU. और कुछ है ही नहीं. बस इतना ही है. So everyone pass the entry. Debit what comes in cash? What is the cash coming in? 110. Asset is going out at what value? As 100. Then lease liability 80. Then ROU carrying amount into 80 divided by fair value 120 plus what? Prepayment plus what? Prepayment. तो कितना रहा ये? टक 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 पॉइंट्स में आएगा ये 60 26 ऐड करने के बाद वही मैं बोला ये 66 पॉइंट कुछ आएगा ये 76.6 yes. So I'll make it round of 77. Sir, in exam can we do? Yes. Examiner will never see that you have made 76 77. उनको logic चाहिए. And which side the difference is everyone? Debit side आ रहा है. 187, 180, 180, 180, 180, what? 7 का difference है. In operating category, what? Gains. If you do from the method number this one, $120 minus 100, 20. 20 into 80 divided by 120, 13.33 आएगा. Method 2 also.
All insurance done? Yes, sir. डन डन चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका स्टडी हब का क्वेश्चन है, ठीक है? या तो स्टडी हब है या कोई दूसरा सोर्स रहेगा, मेरे को भी याद नहीं है अभी। हर एक बेसिक टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, जब एग्जाम इजी होगा। If you just think कि okay, if you just learn the standard etc. no, and then after that practice of past papers. R Limited, an international hotel chain, is currently finalizing its financial statement for the year ended 30th June 2008. Year end क्या है sir? 30th June 2008. And is unsure how to account for the following transaction. On 1st January 2007, it sold one of its hotel to a third party institute and leased it back under a 10 year. So बेच रहे और वापस ले रहे कब? 1st July पर. Then the sale price was 57 million and the fair value was how much, everyone? So the difference is how much? 3. It is the case number 3. The lease payment is 2.5 per annum in arrears, okay, on 30th this one. The present value they have given 20, implicit rate 6.6. The purchaser can cancel the lease agreement and take full control of the hotel within 6 months notice. The hotel had remaining economic life of this one and had the carrying amount of how much, everyone? Carrying amount कितना था? 48. Then question, discuss how the above transaction should be dealt within the financial statement of R Limited for the year. Can I say they are asking for the entire year or not? So entire means depreciation, lease liability, interest also you have to mention yes sir. Working should be nearest to 0.1 million. Yes sir. ये difficult था कि question की easy था. It's nothing, only you have to mention the values you have to do. करते? So what's the hook line? As per IFRS 16, it is a sale and leaseback transaction. As IFRS 15 conditions, IFRS 15 performance obligation is satisfied. Performance obligation is satisfied. So first one, R Limited will derecognize. R Limited will derecognize the asset and recognize ROU and lease liability. Lease liability. Sorry, remember ROU based on what? Based on right retained. And lease liability. R Limited will, okay, मैं ये नहीं लिखूँ, gain or loss I'll write down later. So now in the given case, the selling price is what, everyone? Selling price is lesser than fair value of the asset, is lesser than the fair value of the asset. Therefore, the difference is treated as a prepayment.
prepayment and added to what everyone? ROE. तो डिफरेंस कितना आ रहा था वो 20 60 और कितना था? हाँ 57 है 3 million. Yes sir. The present value of the lease liability. The present value of the lease liability is 20 million. The carrying amount of the asset, that is 80,000. Yeah, 48. 48 million will be derecognized and ROU will be recognized as proportion of right retained. दो बार हो गया यार. Mentioned directly here only. Plus prepayment. So that is how much? 48 into present value of the lease liability is 20 divided by fair value of the asset was 60 plus prepayment of 3. $19 million. Gain relating to the right transferred is recorded in P&L under operating category. अभी वो कितना है? Now आप लोग कैसे करोगे directly? I don't know. Or if you're a little bit smart, how can I do? I can follow that 3-step approach in direct in a single bracket. See, total gain. I say ये कितना था? Carrying amount and this one 60 minus 48. Yes sir. Into what? My total gain is how much everyone? 60 minus 48, 12. 12 minus this one into 20 divided by 60. You have done journal entry no such issues. 8 million. ROU will be depreciated over its lease term, that is 10 years. Therefore, the depreciation of ROU value is how much? 19 million. 1.9, that is 19 divided by 10 will be recognized in P&L under operating category. Yes, sir. And the carrying amount of the asset is 19 minus 1.9. As at 30th June ही था ना? Yeah, 30th June exit, yes sir. Then the last point regarding lease liability. Lease liability
unwinding should be done and interest will be recorded in P&L. That is how much? 20 into 6.6%. Under financing category. The carrying amount of lease liability as at 30th June 2008 is 20 plus 1.3 minus what is the lease payment per year? 2.8. Yes, sir. हो गया आज के लिए बस टाइम हो गया देखो 6 मिनट है और हो गया बस अभी कुछ नहीं सो दिस वाज द एंटायर एफआर पार्ट व्हिच वी हैव डन टिल नाउ एवरीवन ओनली लीजेस का 2 केसेस था वो थोड़ा अलग था एंड देन फॉर नेक्स्ट वीक संडे नेक्स्ट वीक सैटरडे विल डू दी SBR part that is lessors accounting if you know this उधर opposite है that will not waste much time yes sir. Then remeasurement we have remeasurement is also very simple topic remeasurement and lease and non-lease वो करना पड़ेगा वो important yes सर कल तो नहीं है क्लास कल नहीं है कल किसने बोले कल क्लास नहीं है ओके सर ओके So whole week for practice? no Tuesday everyone Tuesday Wednesday Thursday आपको क्लास रहेगी 1.5 hours 9:30 to 11 and there we'll be doing IAS 40 IAS 30 these small topics जो अटेंड नहीं कर पाएंगे already the lectures will be available to you on the portal रात को या सुबह yes रात को या सुबह होगी रात को 9:30 से 11 ओके सर हाँ आराम से डिनर करके और नहीं करेगी डिनर मत करना बाद में करना 11 बजे के बाद सिंपल नहीं तो पहले ही कर लेना 7 बजे तो नींद नहीं आएगी ऐसा हार्डली उसमें 2 टॉपिक कराऊंगा बाबा इफ योर एफआर नॉलेज इज गुड देन यू नॉट फील न्यू और एफआर नहीं आता तो थोड़ा दिक्कत होगा हम से सो एवरीवन टुडे वी हैव डन व्हाट ऑल वी हैव डन द important topics relating to what everyone lease yes sir now this will be your homework question everyone homework question बता देता हूँ लिख के मेरे को भेजना है जी सर साइमल्टेनियसली आपको किट करना ही है
टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा। क्या हुआ रे? एवरीवन सी, ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया कि नहीं? यस सर, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ये भी आपका होमवर्क होगा। दिस ऑल्सो विल बी योर होमवर्क। स्पेसिमन में अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो मॉक के टाइम में कर लेना, ठीक है? डिपेंड्स एवरीवन। कैलेंडर अगेन स्पेसिमन, यस सर। सिटका कंपनी नो नीड टू डू नाउ, ये भी नहीं करना, ये करना आपको। चेरी कंपनी यू हैव टू डू, बेनिटो कंपनी एंड लेरिया कंपनी, ये क्वेश्चंस करने एवरीवन। दीज फोर सब रिपीटेटिव है। आराम से क्या करना, अभी जाके घर पर कुछ मत करना, आराम से टेक रेस्ट, देन मंडे मॉर्निंग और व्हेन यू गेट टाइम रिवाइज एंड देन स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। यस सर, अगर आप कर लोगे तो लीजेस के सारे क्वेश्चन हो गए, 1 2 4 क्वेश्चन बचा होगा पेंडिंग बस। यस सर, सो विद दिस एवरीवन कैन वी एंड दी सेशन? बताओ। Yes, sir. ये अरे इसके लिए तो आवाज आई है, देखो कैसे आवाज आती है तुम लोगों की। So everyone, with this everyone, bye bye. Have a good day. Signing off. Radhe Radhe too. Everyone, let us meet on Tuesday where we'll be doing IAS 40. A very small topic. So IAS 16 revise कर लेना, IAS 40 में कुछ नया नहीं है। हाँ जी सर। Yes sir. Bye bye everyone. Bye, sir. Thank you. Bye. Enjoy your Bye. Sunday. Thank you, and you too. Yes.